Honorable Madam Justice Graciela Dixon, former Chief Justice, Supreme Court of Panama and President of International Association of Women Judges, in its ninth biennial Conference of Women Judges held in Panama City, Republic of Panama, invited Dr. Gandhi to attend the academic event of magistrates and judges of the world in March 2008. Dr. Gandhi took this wonderful opportunity to interact and invite judges for the International Conference of Chief Justices of the World held in Lucknow. Dr. Gandhi, Our founder manager, Dr. Jagdish Gandhi, has just arrived. Let us welcome him with a thunderous ovation, everyone. He's accompanied by our principal and our chief guest for the day. We wish you a very good morning, sir. I request everyone to wave their flags. Let us sing songs of unity and give him a thunderous ovation. A very warm welcome to everyone present here. Education without knowledge and wisdom A very warm welcome to everyone present here. Education without knowledge and wisdom is like someone cooking a delicious pot of soup without putting in the necessary ingredients. The university will only give you an insight, but the true test of knowledge is developed by means of diagnostic testing, which is also a benchmark of the city Montessori school at all levels. Wisdom is gotten over many years of dedicated studies, and those who deal uprightly with their fellow human should be the one accorded with knowledge and wisdom. A very good morning and a hearty welcome to one and all present here. Parents, grandparents, students, and teachers, a very special welcome to all the teams, national and international, who have joined us virtually. Noticing, and we are also honored to have Mr. Kine, a musician from the United Kingdom. He teaches sheet music to students and is also a very keen learner himself. Not a single one of us here has done it alone. We are a patchwork quilt of everyone who has supported us and contributed their time and sweat in the making of this event. This day brings out the enthusiasm and dedication of every student and raises the extraordinary. Absolutely. We are extremely honored to extend our warm welcome to everyone on the United Nations International Day of Education. Education is a human right. It is the key to sustainable development. As Malcolm X once said, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. It is the most powerful weapon one can use to change the world. It feels exceptional witnessing the overwhelming audience and the contagious enthusiasm.
With immense admiration and affection, we welcome each one of you who put in efforts to join us on this glorious day. Without wasting another moment, let us begin with today's renditions. We are also honored to have Ms. Varsha Srivastav, a well-known and a very famous paper jewelry artist. We are so honored to have you here, ma'am. A mother's love is like none other. It knows no bounds and it dares down remorselessly all that stands in its path. When these divine entities join hands with the national song and the school prayer, an atmosphere of true sanctity and optimism is born. Let us witness this beautiful rendition, everyone. We request everyone to stand up for this performance. We request everyone to stand up for the national song and the school prayer.
request everyone to take their seats. Guide me, protect me, illumine the lamp of my heart, and make me a brilliant star. Thou art the mighty and powerful. Please be seated. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के मोल दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी भरी जिंदगी है। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण हुए। निर्माणों के
small token of love and gratitude for our mothers. We owe you everything. You have always been a silent pillar of strength for all of us. Thank you for just being. Prayer is a beautiful silent communion with God. I bear witness to know thee and to worship thee. Just within this sentence, there are many profound ideas. First being that He has created us. We just live our lives moment to moment, forgetful of our source, forgetful of our purpose in our lives, why He has created us. As the prayer suggests, we should pray to God through His manifestation and follow His teachings. We have spiritual obligation to try to understand God. Schools must first train the children in the spiritual principles of religion so that the threat recorded in the books of God may prevent them from the things forbidden and adorn them with the mantle of the commandments. What better way than this? We have amidst us Miss Saraswati Dikshit. Thank you for being here, ma'am. Education makes a child a collaborator both in his own growth and the development of his community. Ladies and gentlemen, may I request you to put your hands together to witness a wishful dream. Leading the procession is our respected principal, Ms. Samvita Adhikari, followed by our respected in charges, Ms. Rashika Dikshit, Ms. Preeti O'Brien, and Ms. Dharmeshna Singh Gupta. Following them
Jai Jagat everyone. Please meet our teams. They were our national, international and local teams. Please put your hands together for all the participants across the world. Thank you. My code is IDE24. IDE has given us very good platform as in this age my students can do perform very well. So now we can meet my team. Hi, I'm Visha Sansar of Class 1A. Hi, I'm Manjira Singh of Class 1A. Hi, I am Ram Kaushik from Class 1A. Hi, I am Vishali Giri from Class 1A. Hi, I am Mukudan Pratap Yadav from Class 1A. Hi, I am Samriti Singh from Class 6A. Hi, I am Prakash Patak of KG2A. I am Shivansh Patel of KG2A. Thank you. Good morning, children. My name is Shalabhakar. I am from St. Louis, Missouri, YMC. My school code is IDE 24. IDE giving us beautiful platform. Meet my team. Hi, I'm Hashisha. Hi, I Shimera Narwar. Hi, I'm Shivansha. Hi, I'm Ram Singh. Hi, I am Singh. Hi, I Aishwarya Patil. Thank you. Hello everyone, this is City Montessori Station Road Campus, Lucknow, and we are participating in the event Live the Rhythm Unite. And here are the participants. Hello, I am Philip Wallace. Hello, I'm Philip Swell. Hello, I'm Philip Abdul. Hello, I'm Philip Sultan. Hello, I'm Philip Dagos. Hello, I'm Philip Anaya. And my name is Tanmay Arora. Thank you. My name is Marina Gupta. My school name is City Montessori School Station. My school code is IDE02. Hello, I'm Rishani. Hello, I'm Risha. Hello, I'm Ashra. Hello, I'm Anantel. Hello, I'm Duan. Hello, I'm Abhi. Hello, I'm Adil. A very good afternoon. I am the team leader of St. Emma Jempuria, Kursi Road campus, and this is my team of Praxinoscope. Our UNIDE is 5. Meet my team of Praxinoscope. I Vishishta. I Alamrita Singh. I Atima Manzoor Khan. I Shreya Mishra. I, Pratik Rajput. I Jedali Karwal. I, Usam Ahmed. I Laiba. And we are the team of Praxinoscope. Good afternoon, everyone. I am the in charge of Remagica and my UNIDE is 4, and this is my participant of the event. Good morning, everyone. My name is Fatima Mirza Beg. I am the participant of the event Magica. I have made 2 stories. One was the Rapunzel and one was the Little Red Riding Hood. I have made from some glitter papers. I have made it on a rough copy, and some material I have used, like I have made a castle of a Rapunzel, and the Rapunzel hairs was there with it is made up of wool, and I have made a Little Red Riding Hood story in which I have shown a wolf behind the tree and a Little Red Riding Hood in the front. Namaste everyone, this is Rita Yadav, the team leader of Bharti Vidya Bhavan's Kedarnath Mother Vidya Mandir, Hingenwad, Wardha, Maharashtra. My team code is IDE23. Now meet my team members. Namaste, I'm Swara Kure, studying grade 5. Namaste, I'm Lavanya Kate, studying in grade 5. Namaste, this is Pooja Sarkar, studying in grade 9. Thank you IDE for providing such
such a wonderful platform to our students for showcasing their talent and creativity. It's a privilege to be a part of this wonderful competition. Thank you. Hi, we are schooling kids and we believe that kids have their own ways of learning things based on curiosity and interest. And they've grown up independent from any curriculum and try their own way of living. But they still communicate and socialize by doing project-based learning together. And now we do our concert to communicate them together. They practice together and they rehearsal together and they perform together. So enjoy! Greetings from River Falls, Wisconsin. My name is Nathan Wells, and I'm the principal of River Falls Public Montessori Elementary. It's an honor and a privilege to be invited to celebrate the United Nations International Day of Education with you. It is so important that we create these bonds for our children and their future, and be models for them to show them the peaceful way forward. We wish you the best, and peace be with you. Ready, go. We are from Sunbeam Sun City, Varanasi. I am the team leader, Sarita Rao, the vice principal. Our team code is IDE 25. Our team is participating in all the events and we are ready to hit the bullseye. Thank you. Jai Jagat everyone. My name is Aparna Verma and I am the team leader of City Montessori School, United World Campus, Lucknow, India. Meet my wonderful team. My name is Anish Gupta. My name is Aditi Chauhan. My name is Shakil Singh. My name is Misha Verma. My name is Harish Kulani. My name is Jayanti Gupta. My name is Shravika Sinha. My name is Aditi Sarvani. A big thanks to ITE for giving us an opportunity for the overall development of our students. Good morning and greetings. My name is Arnab Pandey from Sunbeam School, Sangha. Our school code is IDE 24. Meet my team. Good morning. Myself Rahul Singh, I student of class 7. Good morning. My name is Anil Diva of class 7. Good morning. My name is Aditi Yadav of class 7. Good morning, my name is Neeraj Singh of class 7. Good morning. My name is Shubha, student of class 7. Good morning. I am Ashika, student from class 8. Good morning. This is Aradhya from class 7. Good morning. This is Deepa Prasad of class 7. Good morning. My name is Anjana. Good morning. My name is Aditya and I am from class 6. Thank you, Minju. Good morning everyone. Myself Kalpana Saxena representing City Montessori School, Rajajipuram Campus 3, Lucknow. Our code is IDE 26 for Funky Feet. I'm the school in charge of St. Emarche Kursi Road campus, and this is my team of Live the Rhythm, and our UNIDE is 29. My name is Ishanti Singh. My name is Shruti Mishra. My name is Shalini Upadhyay. My name is Malini Bhatt. My name is Ananya Mishra. My name is Anika Singh. I'm the school in charge of St. Emarche Kursi Road campus, and this is my team of Funky Feet. Our UNIDE is 29. My name is Shakti. My name is Krishna Singh. My name is Anand. My name is Guru. My name is Anish. My name is Ramya Singh. My name is Paul Gupta. Hello everyone, I'm Jyoti Singh, team leader from the RN International School. Our school code is IDE 20. I am Priya Tiwari, event in charge of Funky Feet. I am Bhavya Pani, event in charge of Magica. I am Shaurya. I am Tanapur. I am Prasiddhi. I am Manjita Kushal. I am Pranjal Yadav. I am Shivashi Pandit. I am Rumi Singh. I am Vikram. I am Ananta Mishra. I am Hoki Chawla.
and show their innovations and creations. Thank you. I'm the school in charge of St. Emergent Kursi Road campus, and this is my team of Pentomine. Our UNIDE is 6. Good morning everyone, my name is Krishna. Good morning everyone, my name is Anurag. Good morning everyone, I am Divanjana. Good morning everyone, myself Abheka Pandey. Good morning everyone, my name is Alanda. Good morning everyone, my name is Prakash Sharma. Good morning everyone, my name is Prithvi Prabha. Good morning everyone, my name is Sarah. Greetings to all. I am Mamta Botra from WUCC Smith Memorial School, Varanasi. Through this video, I would like to extend my heartfelt gratitude to City Montessori School, Alikash Raj, for designing such a holistic event for the students. So here I introduce all my participants. Dear parents, though this was just an introductory video, but let me tell you, they all have joined us virtually today. So I think we can all give it up for all the teams once again. Thank you. Excellence in education is when we do everything we can consistently in the assigned task to bring the mark of excellence and perfection. The youth plays the most important role in the future of humanity. A world parliament allows the youth to penetrate deep into the burrows of global issues and helps them morph into the leaders of the generations yet to come. It teaches collaboration, critical thinking, communication, and all the skills they require to become global citizens. Ladies and gentlemen, put your hands together for the upcoming program of the World Parliament. We dedicate this sculpture of the father of our nation, a gift from 1.3 billion people of India to the United Nations. The installation of the Gandhi bust at a time when India celebrates its 75th year of independence is a tribute to the relevance and the universal appeal of the values of the Mahatma. It is a timely reminder for everyone to follow these ideals better and to create a peaceful world, which is the fundamental objective of the United Nations. As the world grapples with violence, armed conflicts, and humanitarian emergencies, Mahatma Gandhi's ideals must continue to guide action in ensuring peace and stability around the world. Gandhiji is a symbol of non-violence, truth, and compassion. He is a symbol of peace, a symbol that reminds us of our duty to create a peaceful world for future generations. The core concepts espoused by the Mahatma are ahimsa, satyagraha, sarvodaya, and swaraj. Well said, Mr. Jaishankar. Peace is the only battle worth waging. Mahatma Gandhi was one of the giants of the 20th century, a global icon of peace and an advocate for the most vulnerable. Gandhiji's vision and philosophy are pillars of the work of the United Nations. His vision went far beyond politics to encompass human rights and sustainable development. Gandhi promoted non-violence, not just as a philosophy and a political strategy, but as a means to achieve justice and change. Indeed, many of his ideas foreshadow the holistic thinking behind the 2030 Agenda for Sustainable Development. A
very warm welcome to all the member delegates to this session of World Parliament 2023. The most pressing problems facing the world today are the ongoing wars and minor conflicts in around 36 countries, most of them in the Middle East, Northwest Asia, and Sub-Saharan Africa. Russia's invasion of Ukraine has left tens of thousands of people dead, displaced millions, and spread economic strife across the world. Our world is more polarized than ever before. Mahatma Gandhi and his values are more relevant for today's society, which is under turmoil, suffering from social evils, corruption, terrorism, and violence. I absolutely agree with you, ma'am. For people around the world, the conflicts, together with other crises, are threatening to unleash an unprecedented wave of hunger and destitution, leaving both social and economic chaos in its wake. There is no denying the existence of significant ideological conflict in our world and the deep social and economic divisions. All delegates present here, we would like to hear your thoughts on this issue at hand. In case you would like to express your views, you are requested to raise your placards. Member Nation Africa, you are recognized. Thank you, ma'am. The wars have hit global economic growth, record high energy prices are also triggering blackouts and fuel shortages in all parts of the world, especially in Africa. It could also lead to economic collapse. Aren't we more divided now than ever before? Delegate from Sri Lanka, you are recognized. Thank you, ma'am. The world is divided like never before, and national unity is also very hard to achieve today. Achievement of unity in the midst of vast diversity is a great problem in many countries. More and more people believe that their idea is the absolute truth, and anyone who is not believing in the same is a threat to the nation. And this is not something organic. The internet has a part to play with this change in the social structure. Member Nation Netherlands, you are recognized. Thank you, ma'am. As said by Martin Luther King Jr., darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Establishing the importance of unity in society requires regular education and examples of unity above division. Thus, there needs to be a shift in the kinds of messaging and examples that we receive through mass media. These information sources need to exemplify the importance and benefits of unity, collaboration, and cooperation so that our attitudes to each other will become calibrated in that direction. Currently, however, such information sources are abundant with divisive messaging, and we thus see myriad negative outcomes in society. Thank you, delegates. It is absolutely true that social media remains a hugely problematic vehicle because of divisive messaging and harmful movements. So, how to combat social media's negative effects? Delegate from Bangladesh, you are recognized. Thank you, ma'am. We need to be empathetic rather than writing a negative comment. We should not feed the trolls. Parental support and guidance could be beneficial in guiding children about the do's and don'ts of negative online messaging and trolling. I feel as basic and essential building blocks of societies, families have a crucial role in social development. They bear the primary responsibility for the education and socialization of children, as well as instilling values of citizenship
and belongings in the society. Member Nation Mexico, you have the floor. Thank you, ma'am. Taking into account the broad experience of our federation in dealing with families worldwide, we see every day that family is where the vast majority of people learn the fundamental skills for life. Member Nation Italy, you may take the floor. Thank you, ma'am. With the right nurturing, parents can provide critical social and financial safety to their children and can guarantee emotional anchoring of their children, which are priceless and vital in a dramatically changing world of ours. Members of stable families are more disciplined when it comes to fulfilling legal and social norms. Member Nation Argentina, you are recognized. Thank you, ma'am. Families need to be helped if they are to fulfill their social roles. Since family stability has been in continuous decline for the last decades in many countries, adults and children today are faced with obstacles, not only to the material, but also to the emotional well-being. Absolutely. Changes in family systems that have occurred over the past half century throughout the Western world are now spreading across the globe to nations that are experiencing economic development, technological change, and shifts in cultural beliefs. There is loss of joy and togetherness in households today. Families today are just a breed or species minus the warmth and unity that existed earlier. People are silent on many issues that are devastating our society today. Would you like to shed light on this aspect? Delegate from India, you may take the floor. Thank you, ma'am. Family values are intrinsic to our Indian society because we believe in living in joint families. However, this very structure of our Indian society is crumbling down fast and people are switching to nuclear families. It is therefore important to realize the importance of family values and cultivating joy as a family. Member Nation Nepal, you have the floor. So true, ma'am. The family system was given a lot of importance in India and other countries in the subcontinent. This has worked more often to make bondings among families stronger. Meanwhile, urbanization and westernization also had its influence on the basic structure of the traditional family structure. The division of the joint family into smaller units is not the symbol of people rejecting this traditional structure. The circumstances and conditions also made the need for the people to split the family. All of these changes are taking place in the context of increased urbanization, which is separating children from elders and contributing to disintegration of family-based support systems. I totally agree with you, ma'am. The decline of intergenerational households in some nations may also reflect the declining influence of the older generation. In at least some of these nations, there is concern that the elderly may lack traditional family support in later life. Delegate from Ireland, you have the floor. Ma'am, I believe that Western family system had changed to adapt to an economy that increased education and geographical mobility. These modern features of Western family systems were being adopted in many regions of the world in the aftermath of World War II. Delegate from Germany, you are recognized. Thank you, ma'am. The educational system becomes both a channel of mobility and in many nations a new way that families could maintain or achieve advantage if they choose to invest in their children's
long-term futures through schooling. For students to achieve a comprehensive, well-rounded education, integrated teamwork on several fronts is vital. Teamwork is necessary between students and teachers, and among parents and educators. Delegate from France, you're recognized. Thank you, ma'am. Parents' influence on school performance appears to be growing in societies where education attainment has become a more important criterion for success in later life. I would like to add that schools and families go hand in hand in making a child grow as a responsible human being. Member Nation India, you are recognized. Thank you. Schools are an indispensable part of our lives. Children spend a considerable amount of time at school throughout their childhood and teenage years. It is the school, with the support of the family, that is responsible for the development of children's career, which ultimately will shape their future. 21st century skills are the skills and abilities students need to succeed in a rapidly changing, technology-infused global society. In addition to developing problem-solving skills, you will also gain the ability to utilize those skills in real-world situations. I totally agree with you, Member Nation India. Over the past 30 years, there have been remarkable studies of family conflicts and their effects on children with regard to their future functioning as adults. These conflicts often lead to risky behaviors, poor attachment styles, and interpersonal relationship struggles at the present as well as in the future of the children from these families. Absolutely true, Speaker Ma'am. We are now going to deliberate on the role of the school and the family in the modern world. Is the power of family unity grossly exaggerated? Or does it really have the capacity to heal the world of all the troubles that seem to be plaguing it presently? Would anyone like to shed light on how children could be equipped to develop this competence? Member Nation India, you are recognized. Thank you. Family values are intrinsic part of the bulwark of our in ancient India. A common and genuine fear amongst Indians is that the rapid westernization amongst Indians is leading towards gradual decline and eventual ruins of Indian culture and tradition. Your fears are genuine, Member Nation India. We have delegates from CMS Lucknow, India amidst us. City Montessori School, also known as CMS, is one of the most oldest and prestigious schools in Lucknow. Throughout its 63-year history, the school has gained many laurels from organizations across the globe. Let us see what this school is doing to foster peace in the world. CMS delegates, you have the floor. Thank you, ma'am. Our school focuses on value education and particularly educating students to spread peace. The school focuses on inculcating the idea that all religions are one and people of any nationality should be treated equally to spread unity and peace across the world. A child's spirit is nurtured by an inspiring school environment. The future of humanity rests upon what kind of environment is provided within the four walls of the school. Similarly, parents need to introduce to their children to a spiritual path in the manner that they understand it and do not consider it as a lecture or burden. They learn this more efficiently by seeing it in their parents' behavior and participating in it with them, not by lectures, so family unity is vital. Ella Wheeler Wilcox very rightly said,
There is no success without unity. Dr. Jagdish Gandhi, the founder manager of CMS, has since the very beginning been promoting world unity and global brotherhood, not just through his words and profession, but through his day-to-day deeds. His personal and family life too reflect his total commitment towards his vision of one world. CMS Delegate 2, you are recognized. Families have never been ideal and flawless, nor may they ever be. Ups and downs are part of family life. Yet, family is said to be the greatest blessing in life. The parents must exert every effort to rear their offspring, for should the children not attain this greatest of adornments, they will not obey their parents, which, in a certain sense, means that they will not obey God. Indeed, such children will show no consideration to anyone and will do exactly as they please. CMS Delegate 3, you are recognized. Thank you, ma'am. Family forms a platform for values, principles, and standards to be nurtured and developed. Deep as our family ties, we must always remember that spiritual ties are far deeper. They are everlasting and survive death. Whereas physical ties, unless supported by spiritual bonds, are confined to their life only. CMS Delegate 3, CMS Delegate 4, you are recognized. Thank you, Mom. I would like to add that the unity of your family should take priority over any other consideration. Family consultation, implying full and frank discussion, and animated by the awareness of the need for moderation and balance, can be the panacea for domestic conflict. CMS Delegate 5, you are recognized. Thank you, ma'am. Consider the harmful effects of discord and dissension in a family, and also reflect upon the favors and blessings which descend upon the family where unity exists amongst its various members. What incalculable benefits would descend upon that great human family where unity and brotherhood were established? CMS Delegate 6, you are recognized. Thank you, ma'am. Family molds life and personalities, defines the value of relationship, and educates us on life. It is a unit we can always fall back on and rely. For family is strength, and while family lives may have changed under new circumstances, family love and values shall remain. Well spoken, CMS delegates. Children see the world the way the elders of the family behave and learn what is right based on their actions. If a family behaves respectfully, with love and care, then these values will be deemed important for the whole family. Now, even when joint family systems are no longer seen and more nuclear families are being created, the importance of teaching and practicing good values will always remain intact. Even in a family of four, if love, joy, and togetherness are valued, then these values will be passed on along generations. Ma'am, I would like to speak on behalf of all delegates present here. Please go ahead, ma'am. Thank you, ma'am. I'm sure all of us present here unanimously agree that schools and families form platforms for values, principles, and standards to be nurtured and developed. Irrespective of what education we are imparting to our students, it is important to teach them lifelong lessons of love and compassion. Only then will we be ensuring their holistic development
and a step towards the betterment of our society, nation, and world as a whole. With this, we come to the end of today's World Parliament. It has been an enlightening session. We have gained a definite insight into right parenting skills and quality education for children. Let us all pledge to prepare our coming generations for all the challenging tasks ahead and contribute from our end to make this world a better place for them and help them in advancing human potential and promoting equality. The world craves peace, harmony, and understanding. If families are happy, the societies live in peaceful coexistence. And if societies live in harmony, the nation as a whole can progress without any situation of conflict or crisis. This in turn would lead to world peace and harmony among nations. At the end, I would like to quote the Dalai Lama. Peace does not mean an absence of conflicts. Differences will always be there. Peace means solving these differences through peaceful means, through dialogue, education, knowledge, and through humane ways. Now, I would like to request you all to rise for the Peace Pledge. I request the audience to rise for the Peace Pledge. We pledge to use our words to speak in a kind way. We pledge to help others as we go throughout the day. We pledge to care for our earth with our healing heart and hands. We pledge to respect people in each and every land. We pledge to join together as we unite the big and small. We pledge to do our part to create peace for one and all. Thank you. I request everyone to be settled. I have a dream of what I wanna be. I wanna be free. That's what my heart keeps telling me. Give me your hand. We'll find a way. There's people out there that feel the same. if we help each other. I just know we can succeed. We are one, but we are different. We're from all around the world. We share the same sun, we share the same oceans. We are every boy and girl. Come together and share our dreams. We'll be amongst the stars, and we know that it's destiny. And we are unity. We are Education is for improving the lives of others and for leaving a community and world a better place. The need of the hour is that all should come together and give same priority to education. Education should be made more sustainable and it should aim towards the holistic growth of students.
I would now like to invite at the podium our honorable and dignified principal, Mrs. Samvida Adhikari, to address the gathering and share her thoughts on the event. Okay. All of us present here have a wonderful shelter, our City Montessori School family, where nobody has to be perfect, but united, just like we are today. We at CMS believe in Vasudev Kutumbakam, meaning that the world is one family, and we raise our hearts in gratitude for being a part of this one family. Jai Jagat, and good afternoon to everyone present in the auditorium. Greetings to the 46 local, national, and international schools from Kuwait, Mauritius, Nigeria, Sri Lanka, Thailand, United Arab Emirates, and United States of America. Family and friends all over the world connected with us via YouTube live streaming. Our children are one of a kind, extremely warm-hearted and passionate young people. Indeed, the best the Lord has ever sent. Being around the youth associates us with their inherent joy, energy, and spirit. Today is one such day wherein, with immense pleasure, I welcome all to the celebrations of United Nations International Day of Education 2023. The time to prioritize quality education and lifelong opportunities for all in order to establish peace and development. The UNESCO has declared this International Day to all the girls and women in Afghanistan who have been denied their right to learn, study, and teach. Throughout this event, we ponder upon the importance of protection and respect for the universal human right, the right to education. I would also ask our children to never take their education for granted, to count their blessings and share freely with others what they have received. You must give the message through action and deed, not alone by words. Always ensure none of your words and deeds ever make your parents sad. We would like to welcome and acknowledge the presence of our honorable chief guest and the father and founder manager of City Montessori School, respected Dr. Jagdish Gandhi, who established the motto of Vasudev Kutumbakam for world unity and peace. Sir, we thank you for always highlighting the impact of holistic education for a safe world. Thank you for honoring us with your gracious presence. On this occasion, I would like to owe my heartfelt gratitude to the Lighthouse of CMS, who are relentlessly working together to give our students a promising future
in a safe world. Profound gratitude to our loving and caring mother, founder director of CMS, respected Dr. Bharati Gandhi, for a sincere devotion and novel approaches towards improving education, for always channeling women and young girls, for getting recognition in society through education. Thank you, ma'am. Our diligent gratitude to the idolin educationist, economist, President and Managing Director CMS, respected Professor Geeta Gandhi Kingdon, for her outstanding contribution to education and development, her multifarious efforts towards implementing the education policies that focus on intensive and critical thinking along with character building, for reimagining what learning could and is beginning to look like. I thank ma'am in absentia because currently she has been invited to the Global Governance Forum meet at Madrid, Spain for strategizing the structure formation of a global governance, and this is an extremely proud moment for all of us at CMS. Sincere and deep gratitude to a noble humanist, Dr. Sunita Gandhi, founder of Devi Sansthan and Council of Global Education. Also, Honorary Academic Advisor, CMS, and the program creator of ALPHA. ALPHA means Accelerating Learning for All. The methodology with the motto, Leave No Child Behind, which is highly appreciated by the parents of classes 1 and 2 of our campus. Her integrity, determination, grit, and ability to stand for what she believes makes her an extraordinary educator. She always tells us that education is the passport to freedom. Earnest gratitude and thank you to the Superior Principal and Head, QAID, respected Susmita Ghosh, whose sense of commitment creates an apt platform for us to develop both as educators and individuals. Nothing great will be accomplished without great individuals, and individuals are only great if they are determined to do so. It's my ardent pleasure to also welcome my respected mentors, Senior Principal, Gomti Nagar Extension, Ms. Manjeet Batra, Senior Principal, Aliganj 2 Campus, Ms. Jyoti Kashyap, and Principal, Gomti Nagar Extension, Ms. Sangeeta Banerjee in absentia. A heartfelt gratitude to the marvelous senior principals, administrators, team leaders, and team members of international, national, local, and CMS campuses. Ms. Dawn Taylor, Head of School Development CMS and International Education Consultant, United Kingdom. Head of CEO Virtues Matter, Ms. Dara Feldman. Mr. Kian, musician from United Kingdom. He has studied Western classical piano at Leeds College and is teaching sheet music to our children. We welcome all of you, respected leaders. If your child feels loved, they are safe. If your child feels loved, they can open up to you. If your child feels loved, they will be courageous in life because they know that they have a cushion to fall back on. More than ever today's kids need brave parents who not only love them, dreams. Here at CMS, the future is completely open and they're writing it moment to moment. With immense pleasure, we welcome our dear grandparents and parents. We cherish our partnership and collaboration in all endeavors and treasure your love and concern. The merit of every competition is in its judgment.
So we have brought together these esteemed experts on board to help with the difficult task of picking the winners. Please meet our incredible panel of judges. Miss Saraswati Bodhaku Dikshit, a published author and an independent content writer. She has contributed to many anthologies as well as children's newspapers. She's an entrepreneur and restorator. Miss Shweta Arora Nair, the founder and editor of News Shuttle, a newspaper for kids. Writing is a passion, and she hopes that this endeavor will help kids learn and have fun at the same time. Mr. Swatang Gupta, a professional singer, performer, composer, and a YouTuber. He has done more than 450 shows and has also performed for renowned bands like DD National, Hindustan Times, Dainik Jagran, State Bank of India, and many others. Miss Varsha Srivastav, well known as the paper jewelry designer, for which she holds the first world as well as national records. Her brand name is Varsha's Creations. She is also an entrepreneur, online educator, and the president of the NGO Empower Skill Foundation, where she is continuously working for underprivileged and special kids and old age people. Ms. Surabhi Singh, the Vice President of Film Federation, Uttar Pradesh, Kathak Guru and Secretary, Cultural Quest and Human Rights. Mr. Adnan Rizvi, Assistant Writer, Cinematographer, Photographer, Video Editor, and Content Writer. Mr. Shameen Mubahid, Head of the Western Classical Music Department, CMS. We are thankful to the jury for giving us their time and for providing a fair judgment to our students. We are grateful for having you as a part of the United Nations International Day of Education 2023. At CMS, we are building a future-focused education outlook that contributes to humanity. CMS believes that amongst the greatest of all services that can possibly be rendered by a man to Almighty God is the education of children, building their character and inculcating in their tender hearts the love of God. I'm very grateful to our parents for their role in achieving this, and which is very evident from the beautiful rendition we witnessed by the Mother's Choir. We recognize that every child has a unique talent and a unique way of expressing it. And indeed, our students, time and again, have been validating their uniqueness as they grab the various opportunities of showcasing their talents. The best part of any competition is that through it we discover what we are capable of and how much more we can actually do than we ever believed possible. A school being the foremost fountain of knowledge to which students are exposed, we emphasize and intricately design a yearly curriculum that is inclusive of various opportunities to experience holistic and value-based education of the highest quality. Stars are the navigation to the destination, and counting is the best way to check the path of success. My students are those stars who have brought laurels to the branch, showcasing their global competencies. They have always made us feel proud through their achievements in different roles, in different fields of literature and arts, such as first ranks in Olympiads at the national level, international level, gold medals in various arts, writings, readings, music, sports competition, and championships at different levels. The only skill that will be important in the 21st century is the skill
of learning new skills. Keeping this in mind, my staff also keeps on honing their skills through different competitions, seminars, and are bringing laurels to the branch. They apply their knowledge to build a future more secure and aware. And with a clear vision and foresight and prudence of our founders and management, we are trying to curate a unique space for every child as per his or her interest, abilities, and ambition. The teachers at CMS are consistently and actively polishing the values of the 6 C's in our children. We are pleased to see our young children being conscious of the choices they make each day and the realization of the impact of their actions. We experience unfathomable satisfaction when we see our students beaming with joy and blooming in the healthy and enthusiastic environment created by the teachers, both while learning and playing at the campus. Our achievements would be incomplete without the mention of a wonderful team of teachers and staff who work with dedication and put in all their efforts for the welfare and education of the students. Dear students, a little progress each day adds up to big results. To be successful, you need to work hard and be persistent. However, you must not forget to take a break, treat yourself, and then continue to handle whatever life brings forth to you. Best of luck to each one of you. We thank God and believe that He is guiding us and is with us as we continue our journey. Thank you all for your undeterred faith and trust. I wish all present here a delightful new year of good health, great success, and hope that this year too we will work closely together to make it a year of global action and sustainable development. I am happy to inform you that a new pre-primary and primary building will be introduced in the month of March 2023 and will consist of a new library, computer lab, activity room, play area, hall, and bigger classrooms. Also, we are starting with the afternoon shift along with the morning shift. I'm sure that this extension of the campus will further benefit our students. So without further ado, now let us sit back and applaud the success and cheer the beautiful performance of our students as they unfold, showering their love for you through the programs which have been prepared specially for you. I hope the audience in the auditorium enjoys their afternoon and those on live stream enjoy the programs. Thank you and Jai Jagat. Thank you, ma'am. Your words mean a lot to us. It is my pleasure to extend a hearty welcome, big and warm enough to encompass all those who are present with us, physically and virtually. To say we are thrilled to have you here would be an understatement. Luckily, the weather is on our side. The sun and I are pleased to offer you a very warm welcome through this presentation.
जागी है भाग्य हमारे, आपकी कर्मठता ही बनी है आज आपकी शान। आपका स्वागत करने पर हम सबको है अभिमान। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। छायो रे छायो रे छायो रे, हृदय में आनंद छायो रे। छायो रे छायो रे छायो रे, हृदय में आनंद छायो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। मानवता की मूर्ति आप है, अनुपम काम किए हैं हो। मानवता की मूर्ति आप है, अनुपम काम किए हैं। कठिन परिश्रम और लगन से निर्णय सदा लिए हैं। अनुपम है उत्साह समय मन भावन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आपकी कार्य कुशलता से ही हर्षित है जन सारे हो। आपकी कार्य कुशलता से ही हर्षित है जन सारे। आपको अपने बीच में पाकर हमको मिले सहारे। स्वागत करने को जन जन अति आतुर पायो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। छायो रे छायो रे छायो रे, हृदय में आनंद छायो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आज ये शुभ दिन आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। Light symbolizes power, strength, and hope. May I now invite our respected guests of honor, mothers and grandparents, to light the torch and spread the light that our founders have kindled, so that its radiance is spread far and wide. And I request our respected founder manager, Dr. Jagdish Gandhi.
request Preeti ma'am to please come up on the stage. I request Preeti ma'am to please come up on the stage. May this love spread far all over the world for peace and harmony. May the Lord keep this light always burning forever and ever. May this light spread far all over the world for peace and harmony. May the Lord keep this light always burning forever and ever, forever and ever, forever and अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ ज्ञान का दीप जलाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ ज्ञान का दीप जलाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ ज्ञान का दीप जलाए। May this light spread far all over the world for peace and harmony. May the Lord keep this light always burning forever and ever. May this May I now invite our respected founder manager, Dr. Jagdish Gandhi, mothers and grandparents, to light the torch and spread the light that our founders have kindled, so that its radiance is spread far and wide. always burning forever and ever, forever and ever, forever and ever. May this light spread far all over the world for peace and harmony. May the Lord keep this light always burning. Dear ladies and gentlemen, put your hands together for this little guiding light that will spread its radiance far and wide. The light symbolizes the spirit, the knowledge and life. It has long been the symbol of knowledge, positivity and success. It represents the universal human rights and reflects the spirit of unity and cooperation.
request all the mothers who are there in the auditorium to please come up on the stage. A humble request. I request all the teachers to please escort the mothers to the stage. Even the middle level leaders look into it, please. All the mothers to be on the stage. You will be lighting the light of lamp and then you will be standing on the steps here for a group photograph. All the teachers, all the in charges, please escort the mothers to the stage. All the mothers request you to please come on the stage. Teachers, ensure every mother is garlanded. Every mother should be garlanded, please. I request all the teachers in front, ensure every mother is garlanded, please. All the teachers join and see that every mother is being garlanded. Request Rashika ma'am, Preeti ma'am and Sarmishra ma'am to be here in the auditorium for the photograph.
request Rashika ma'am and Sarmeshra ma'am to be here in the auditorium for the photograph. We request the judges to join for the photograph. What a riot of colors. Everybody who's in the auditorium, please give it up for this. Thank you. Please exercise your hands a little. Yes, thank you. Thank you, everyone. We all need light in our lives. It shows us the right path and motivates us to fight the darkness. It conquers the darkness and brings out the chaos. We live in a world of diverse cultures and religions. Responsibility and respect of others and their religious belief are also a part of freedom. Unity of religion is a core teaching of the Baha'i faith, which states that there is a fundamental unity
in all religions. All religions, cultures, and beliefs deserve the same amount of respect, even if they are different, but the essence of all religion is one. To emphasize on that, we have students portraying respect and unity amongst all religions through a prayer. It was a bright sunny day, and all the 6 friends were doing gardening in a beautiful garden. Even though all these 6 friends belonged to different religions, still there was a lot of love and harmony amongst them. One day, a wicked girl entered their garden, and after seeing so much love between the friends, she planned a mischievous Please switch on the stage lights. She planned a mischievous plan in her head to break their beautiful bond of friendship. Sadly, the wicked girl easily separated all the 6 friends. Now, a wise child of CMS enters and explains the true meaning of friendship to all the 6 friends. Dear friends, what happened? Oh, I see. You all are not talking to each other. Oh, I got it. Do you know 7,500 years ago, Lord Vishnu incarnated on earth to give the message of righteousness to the human race? Do you know 2,500 years ago, Lord Buddha incarnated on earth to give the message of equality to the human race? Do you know 2,000 years ago, Jesus Christ incarnated on earth to the human race? Do you know 1,400 years ago, Allah incarnated on earth to give the message of brotherhood to the human race? Do you know 550 years ago, Guru Nanak Ji incarnated on earth to give the message of sacrifice to the human race? Do you know 200 years ago, Lord Baha'u'llah incarnated on earth to teach human beings unity of hearts? So, my dear friends, when none of the avatars of God taught you hatred, then why are you all fighting amongst yourselves? Our founders, Dr. Bharati Gandhi ma'am and Dr. Jagdish Gandhi sir, has always taught us unity is strength. When we stand together, nobody could break us because God is one.
to Edmund Harvey, a day without prayer is a day without blessings. Excuse me. Excuse me, beta. According to Edmund Harvey, a day without prayer is a day without blessings, and a life without prayer is a life without power. Prayer has healing power and can be recited any time of the day. It is not a religious practice, but a way to find peace and happiness. Acceptance of the oneness of mankind is the first fundamental prerequisite for reorganization and administration of the world as one country, the home of humankind. Our country, India, supports all religions and treats them all as one under the law, and all people live in India happily together. There is unity in diversity, which is the matter of pride for our country. Now, let us start the day with all religion prayer. चौरासी
मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, संरक्षिक्षा से करता जो शिलवान है, मैत्री प्रज्ञाशील हो जिसमें सदैव तन मन और संयम, कर पूजा सद्गुणों की नारा, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। संत बने के गुरु तेरे नाम लाए आपको अपने पीछे लग के साथ मखनिया भी तू बोले न जाए बंदे वाहे गुरु सतनाम सतनाम है बंदे वाहे गुरु के Precious,
promised one of all the ages, the promised one of all the ages. How long?
Knowledge of oneness of humanity is important for the abolition of all prejudices. Let us all come together, not for cutting trees, but for irrigating deserts. All the religions, all the singing is one song. Let us respect all religions. It is time to focus your attention on your screens and put your hands together as we bear the logo for you all to discover the true meaning of education. We request our respected Dr. Jagdish Gandhi to do the honors. At CMS, we are taught various values that will help us to evolve into global citizens. I would now like to read a few quotes from a very important spiritual book. Service to the cause of morality, raising the moral tone of the students, inspiring them with the sublimest ideas of ethical refinement, teaching them altruism, inculcating in their lives the beauty of holiness and the excellency of virtue, and animating them with the excellences and perfections of the religion of God. Service to the oneness of the world of humanity, so that each student may consciously realize that he is a brother to all mankind, irrespective of religion or race. The thoughts of universal peace must be instilled into the minds of all students in order that they become the armies of peace, the real servants of mankind. God is the Father of all. Mankind are His children. This globe is one home. Nations are the members of one family. The mothers in their homes and the teachers in the schools must teach these ideas to the young from the cradle up to the age of manhood. Man is even as steel, the essence of which is hidden. Through admonition and explanation, good counsel and education, that essence will be brought to light. If, however, he be allowed to remain in his original condition, the corrosion of lusts and appetites will effectively destroy him. The mind is the power of the human spirit. Spirit is the lamp. Mind is the light which shines from the lamp. Spirit is the tree, and the mind is the fruit. Mind is the perfection of the spirit and is its most essential quality, as the sun's rays are the essential necessity for the sun. In truth, knowledge is a veritable treasure for man and a source of glory, of bounty, of joy, of exaltation, of cheer and gladness unto him. Happy the man that cleaveth unto it
and vow betide the heedless. Here I have a beautiful book on family unity, and I would like to read out a few quotes to you. The parents must exert every effort to rear their offspring to be spiritual, for should the children not attain this, greatest of adornments, they will not obey their parents, which, in a certain sense, means that they will not obey God. Indeed, such children will show no consideration to anyone and will do exactly as they please. Deep as our family ties, we must always remember that the spiritual ties that are far deeper, they are everlasting and survive death, whereas physical ties, unless supported by spiritual bonds, are confined to this life only. Now we need an educator who will be at the same time a material, human and spiritual educator, and whose authority will be effective in all conditions. Family unity is a priority. The unity of your family should take priority over any other consideration. Family consultation employing full and frank discussion and animated by awareness, discussion and awareness of the need for moderation and balance can be for domestic conflict. Blessed is the spot and the house and the place and the city, and the heart, the mountain, and the refuge, and the cave, the valley, and the land. Consider the harmful effect of discord and dissension in a family, and also reflect upon the favors and blessings which descend upon the family. Where unity exists among its various members, what incalculable benefits and blessings would descend upon that great human family where unity and brotherhood were established. Blessed is the house that has attained unto God's tender mercy, wherein God's remembrance is celebrated, and which is ennobled by the presence of God's loved ones, who have proclaimed God's praise, immersed deeply in the grace of God, and been honored by chanting God's verses. Truly, they are the exalted servants of God. I would now like to read a few quotes. Few quotes from the Spiritual Book of Education for Children. Understanding future responsibilities.
Children need to be given opportunities to understand their mission in life. Understanding the importance of moderation, as the children mature, they need to learn the wisdom of moderation as it applies to individual endeavor and behavior, to civilization itself. Children need to acquire self-knowledge and understand the importance of assuming responsibility for their own spiritual development. Discerning the difference between divine and satanic knowledge. Education should enable the learner to discern between divine and satanic knowledge. It is time to focus your attention on your screens and put your hands together as we bear the logo for you all to discover the true meaning of education. Let us all come together not to cut jungles, but to irrigate deserts. I would like to request our respected Dr. Gandhi to do the honors. We believe in holistic education. Ladies and gentlemen, put your hands together. Yes, please, it's time to exercise your hands once again. Yoga is the most powerful tool necessary to raise human consciousness. Yoga is a form of expression and spirituality. It is the journey of the self, to the self, through the self, and so is dance. The goal of this art is serenity, balance. It is about truly finding peace in your skin. Ladies and gentlemen, you are about to witness and experience your own existence within yourself through these magical yogic postures performed by the students of the junior section. Put your hands together.
Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Dharna, Dhyan, or Samadhi, a spiritual discipline based on an extremely subtle science, yoga. Lord Shiva is the first yogi or Adi Yogi who poured his profound knowledge into the legendary Saptarishis or the seven sages on the banks of the lake Kanti Sarovar in the Himalayas. Derived from the Sanskrit root yuj, meaning to join or to unite, focuses on bringing harmony between mind and body. Yoga is self-realization to overcome all kinds of sufferings, leading to the state of liberation, moksha, or freedom, a union of individual consciousness with that of the universal consciousness, indicating a perfect harmony between man and nature. The Saptarishis carried this powerful yogic science to different parts of the world, including Asia, the Middle East, Africa, and South America. And this legacy, till date, is proudly advocated by the students of City Montessori School to the world, as it proudly sends delegation to NASA on International Yoga Day. Master your breath, let the self be in bliss, contemplate on the sublime within you.
योगा से ज्यादा सारा संसार है, योगा से ज्यादा सारा संसार है। वो स्वच्छ मन रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग, ऐसा हो बस जीने का ढंग, छूले जहां उड़कर गगन। योगा से ज्यादा संसार है, योगा से ज्यादा संसार है। क्षण भी है तू ही समय भी है, सृष्टि भी तू ही प्रलय भी है, स्वयं ही तू अग्नि है। Everyone, give it up for yoga students. Yes. True yoga is not about the shape of your body, but the shape of your life. Yoga is not to be performed, it is to be lived. Yoga doesn't care about what you have been, it cares about the person you are becoming. It is designed for a vast and profound purpose. It stimulates our inner light and quiets our overactive mind that fluctuates in thousand directions at the same time. It is both energy and rest. Thereby, the only way to spread peace is to have peace within us. And peace within us helps us to bring unity in this world. The students just now made us realize that external cleanliness, although it is but a physical thing, has a great influence upon spirituality. The mind is the power of human spirit. Spirit is the lamp, mind is the light, which shines from the lamp. Spirit is the tree, and the mind is the fruit. Mind is the perfection of the spirit, and is its essential quality, as the sun's rays are the essential necessity of the sun. Charlie Chaplin once said, "The best thing in life is to go ahead with all your plans and your dreams, to embrace life and to live every day with passion, to lose and still keep the faith, and to win while being grateful. All of this because the world belongs to those who dare to go after what they want, and because life is really too short to be insignificant." He was a man who believed that laughing and smiling is what makes life worth living. Today, we pay homage to the icon,
this performance. Put your hands together for the students of pre-primary section. Hello, Ahan. Why are you dressed up like Charlie Chaplin? Hello, Anam, because I love Charlie Chaplin. He is my hero. He is my favorite character too because he was kind, gentle and made everyone smile. Oh yes, then let's bring a smile on everybody's faces and pay tribute to our hero, Charlie Chaplin! Your applause will encourage them, ladies and gentlemen. They're very young. Yes, dear ladies and gentlemen, it should not stop. Go with the music. Enjoy the show. He's our favorite character too. An icon, a legend. On the tune. Can we clap the hands loudly for Charlie Chaplin? Yes!
my God! That performance was so energetic! Yes, Aradhya, a sophisticated and synchronized performance. A big round of applause for the performers. Music calms our hearts and never truly fails to bring us solace. Even in our darkest hours, it enlightens the body, mind, and soul. Music washes away from the soul the dust of everyday life. Without music, life is a journey through a desert. Where words fail, music speaks. Music is the language of the spirit. Let us inspire ourselves and enjoy this melodical performance by the school choir.
ni sa 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 ni sa 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 ni sa 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 ni sa sa re sa re 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 sa re 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 sa re 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 sa pa ma re sa ni sa pa pa ma re sa ni pa ma re sa ni sa 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 ni ni pa 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 ma ma re re sa 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 ni ni pa 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 ma ma re re sa ni sa re ma pa ni sa pa ni sa pa ni sa ni pa ni ma pa ga ma re sa. आई बरखा की ऋतु आई बरखा की ऋतु आई सुंदी सुबलाई आई बरखा की ऋतु आई बरखा की ऋतु नन्ही नन्ही बूंदिया में हाँ परत है नन्ही नन्ही बूंदिया में हाँ परत है पवन चलत पुरवाई पवन चलत पुरवाई आई बरखा की ऋतु आई बरखा की ऋतु आई. 6, 7 and 8 1 दादुर मोर पपीहा बोले दादुर मोर पपीहा बोले पियू पियू लटत काल रस गोले पियू पियू लटत काल रस गोले गणन गणन गण बादल गरजे गणन गणन गण बादल गरजे तड़पत नागिनी आई तड़पत नागिनी आई बरखा की ऋतु आई बरखा की ऋतु आई सोंधी सुबलाई आई बरखा की ऋतु आई नन्ही नन्ही बूंदिया में हाँ परत है नन्ही नन्ही बूंदिया में हाँ परत है पवन चलत पुरवाई पवन चलत पुरवाई आई बरखा की ऋतु आई बरखा की ऋतु आई बरखा बरखा की ऋतु आई. We accord a very warm welcome to our founder director, respected Dr. Bharti Gandhi. We are very thankful to you, ma'am, for gracing the occasion. Well, music suits your soul, a means of giving forms to our inner feelings without attaching them to anything. It gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Thank you, school choir, for the wonderful performance. We have amidst us our respected founder director, Dr. Bharti Gandhi. We call a very warm welcome to you, ma'am. Thank you for gracing the occasion.
Throughout every country and area in the world, you will find a different kind of music and musical instruments played in an entirely different manner. Music is something we all need in our life. Every mind has a different take on these sounds, and there is no barrier as to what can and can't be extracted from the music that is produced. By playing music, there are many feelings and emotions that the listeners can take from it. It is rightfully said by Beethoven, music is a higher revelation than all wisdom and philosophy. Music is the electrical soil in which the spirit lives, thinks and invents. Let us proceed with the next program, percussion. Hello everyone, presenting to you our Rocky Percussion Band that will prove that the kitchen utensils are not confined to cooking only but can also play a role of musical instruments. Let's together enjoy this throbbing performance. Dear parents, I think we have forgotten to applause. These are very little children, little budding musicians. It would be very encouraging if you clap for them. People sitting in the back. I should hear it louder. Yes, thank you.
Percussion is the biggest challenge in a lyrical way. Put your hands together for this wonderful performance. The greatest strength of mankind rests in steadfast unity. Familial ties are restored, sports teams are victorious, and friendships are strengthened when unity is a priority. Martin Luther King Jr. said it this way: "We must learn to live together as brothers or perish together as fools." Sometimes unity manifests in a slow and patient way, like working together on a group project. Other times it's bold and energetic, like joining a march for peace. Regardless of how you aim for togetherness in your life, it undoubtedly and inevitably makes the world a better place. I present before you all our next presentation, the World Unity Prayer, performed by the students who truly believe in communal harmony. Let's give it up for the students, everyone. Yes, yes. Once again, I would like to read out some quotes to you from the Family Unity book. All efforts and exertion put forth by man from the fullness of his hearts is worship. If it is promoted by the highest motives and the will to do service to humanity, this is worship to serve mankind and to minister to the needs of the people. As the provider of the family, it is your bounden duty to look after the needs of your wife and children. You must fulfill their needs first before fulfilling yours. Understanding your responsibilities. Understand your responsibilities as the husband and the father. Roles and responsibilities. The learned of the day must direct the people to acquire those branches of knowledge which are of use, that both the learned themselves and the generality of mankind may derive benefits therefrom. You must promote by every means in your power the material as well as the spiritual enlightenment of your students. The means for the education of children. What a more sacred privilege, and also what a weightier responsibility than the task of rearing up this new spiritual generation of youth, and of inculcating into their youthful and respective minds the teachings of God, and of thus preparing them to fully assume and properly discharge the weighty responsibilities and obligations of their future life. Teach the children to free themselves.
A.D. Williams once said, imagine what 7 billion humans could accomplish if we loved and respected one another. Just imagine. Imagine if there was no greed. Imagine if there was no comparison. If everyone was running their own race, but cheering for all others at the same time. Maybe we'll never see that in our lifetime. But what we all can do is start with ourselves. Start with yourself. Choose to lift others up. Choose to set the example of kindness and integrity, the example of compassion and understanding. There's a quote that says, no matter how educated, talented, rich, or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all. Integrity is everything. It really is. Who you are is far more important than what you have. And it will always be. Who you are is measured by how you make others feel. Be kind to each other. In a world where you can be anything, be kind. Choose to be the change you wish to see in the world. Decide you will not wait for someone else. You will set the example. Be kind. Because you never know how much that person is suffering inside. You never know the difference your words can make, the difference your presence can make, the difference you can make to one human life. Something beautiful. Not just these meaningful words, but also a call for a peaceful environment to reside. This is all so new. All I had known was a land in turmoil with families who have forgotten and stopped hearing your voice. I remember, even after hearing the call, and instead of seeing it another way, we dismissed it and demanded our own way. And now the world feels more distant and divided. How many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes, so we could learn from each other and find beauty in differences. I can see it. What remains here this moment is so much greater than what divides us. How can we make it last longer than just today? With tolerance and respect, we can live together in one big whole. So we gather here as one big trial, and earth is the tent we all live in. Yes, and together we can send out a call for all the world to join us. Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Unity is the biggest power for people who cooperate with others. We cannot do all things alone. We need support. Harmony and peace are a matter of building bridges. Let us build a strong bridge joining borders. Let us witness the World Unity Prayer.
without stress is the easiest type of existence. Manpower without unity is not a strength unless it is harmonized to make it a spiritual power. Do not let the behavior of others destroy your inner peace. Peace and harmony mean dealing with disputes and resolving conflicts fairly and properly with neutralization and middle way principles to further the well-being of mankind as a whole. Whatever we wish to do must be done in harmony with the good pleasure of God. We should see what is the will of God and act accordingly. There can be no doubt that such commendable deeds are thankfulness for the favors of God. Peace and harmony can bring a peaceful and stable order to society. Peace and harmony are the necessary condition for the survival and development of mankind. A world deprived of peace and harmony certainly falls apart and returns to the jungle where the strong prey on the weak. A wise man is one who can live in peace with things he cannot change. When we have accepted the worst, we have nothing more to lose. Happy are they who detach themselves from all the hatred that prevails in society. Let us promote the unity of the human race in all the countries of Oceania. May there be humanity and compassion in all the countries of Oceania. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. The first thing needed for enduring peace among nations is the spirit of brotherhood. You may call for peace as loudly as you wish, but where there is no brotherhood, there can be no peace in the end. Peace may be fragile and vulnerable, but peace is possible, and it is attainable even in a turbulent world like ours. Let us promote the unity of the human race and bring thoughts of love and constructive brotherhood in all the countries of Europe. May there be friendship and happiness in all the countries of Europe. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. Peace and justice are two sides of the same coin.
If you want peace, work for justice. There is no peace without justice, and no justice without forgiveness. A person who invests in knowledge, peace, and justice always pays the best interest. True peace is not merely the absence of war, but it is the presence of justice. Only the just man enjoys peace of mind. Let us promote the unity of the human race and bring gratitude to promote thoughts of justice in all the countries of North America. May there be justice in all the countries of North America. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. There was never a good war or a bad peace. All we are saying is to give peace a chance. When we learn to start working together than working against each other, things might start getting better. Just as one candle lights another and can light thousands of other candles. So one heart illuminates another heart and can illuminate thousands of other hearts. Let us promote the unity of the human race and light the candle of equality and empathy to bring peace in all the countries of South America. May unity prevail on earth. The more we sweat in peace, the less we breathe in war. If we do not find peace inside our own hearts, then we will not find it anywhere else on earth, as it is the only way for the survival of humanity. Tranquility cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. All we are saying is to give peace a chance. Let us promote the unity of the human race and hope for the humanistic development in all the countries of Africa. May there be broad-mindedness and learning in all the countries of Africa. May unity prevail on earth. We are only as strong as we are united, as weak as we are divided. War destroys the fabric of society and damages the environment. It uproots individuals, families, and often entire communities, making people refugees or internally displaced persons. We envision a world without war and see the need to develop the popular and political will to end war. Unity and peace among different races and different communities belonging to different religions is indispensable. Let us promote the unity of the human race and hope for prosperity in all the countries of Asia.
May there be secularism and learning in all the countries of in all the continents of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. Promote the unity of the human race. The fundamental purpose of animating the faith of God and His religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race and to foster the spirit of love and friendship amongst men. I am a representative of the United Nations organization. It works for the cause of unity and harmony among all the nations of the world. Sustainable Development Goal 16 promotes peaceful and inclusive societies for sustainable development and builds effective, accountable institutions at all levels. We were born to unite with our fellow men and to join the community service with the human race. When you breathe in all the grace available to you and release everything that is outside of your control, you'll discover peace that passes your circumstances. All it takes is practice. Do your little bits of good where you are. It's those little bits of good put together that overwhelm the world. In every moment, there is something as deep and boundless as a winding river waiting to be found, a true peace that flows, beckoning you to rest. I request to promote peace, justice, and harmony. Yes, I totally agree with you and appeal to all the nations of the world to come together to prepare our future generations born and yet to be born, to prepare them for life and to change the world into one beautiful God's earth. Now is the time to reset, reshape, rebuild and recover for a better place to live. I pray for the willingness to accept social differences and enjoy the beauty of diversity among all the nations of the world. May there be hope and faith in all the continents of the world. May unity prevail on earth. 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 May unity prevail on earth.
song of unity. Sing the song of unity. Let all the world be united. Let all the world be free. Let all the world be united. Let all the world be free. Let all the world sing together. Sing the song of unity. Sing the song of unity. Let there be unity on earth. Let there be unity on earth. Listen to the sound of the ocean. Listen to the sound of the breeze. Listen to the sound of the ocean. Listen to the sound of the breeze. Listen to the sound of the jumping birds. What a spectacular viewing, gentlemen. Let's all clap together and pray for unity. Let all the world be free. Let all the world sing together. Join the music, everyone. Sing a song of unity. Let there be unity on earth. Let there be unity on earth. People of the world come together. Join hands to sing equality. Dear parents, People let of us the get world to come settle down. together. Join hands to sing equality. Yellow, red, white, black and brown. Sing the song to be free. Let all the world be united. Let all the world be free. Let all the world be united. Let all the world be free. Let all the world sing together. Dear parents, it's a humble request. Please be seated. Education is a universal law whose purpose is service to the principle of the oneness of humanity and the establishment of the unity of humankind. The oneness of humanity is a fundamental principle of God's teachings. Unity to rule must stand the severest strain without breaking. We cannot be separated in interest or divided in purpose. We are each other's harvest. May unity prevail in all the continents of the world. Dear parents, I think we can give it up for the primary students. Once again, please put your hands together. Please encourage them and show your love. And let's pray for unity in the entire world. Children should learn perseverance in all things, the will to advance, high-mindedness and high resolve, chastity and purity of life. Thus shall they be enabled to carry to a successful conclusion whatsoever they undertake. Every word is invoked with a spirit. Therefore, the speaker or expounder should carefully deliver his words at the appropriate time and place.
One word may be likened onto fire, another onto light, and the influence which both exert is manifest in the world. Service to the world of humanity should be obligatory. Every student should know with perfect certainty that he or she is the brother or sister of the people of all religions, racial, national, patriotic, or political bias, so that he or she may find thoughts of universal peace and the love of humankind firmly established in his or her heart. A child is like a young plant. It will grow in whatever way you train it. If you rear it to be truthful and kind and righteous, it will grow straight. We feel honored to have with us our honorable chief guest, our respected founder manager, Dr. Jagdish Gandhi. Thank you, sir, for blessing us with your presence and enhancing our joy. I would like to request our respected founder manager to enlighten us with his kind words. सबसे पहले तो मैं अलीगंज 2 की प्रधानाचार्य श्रीमती संविदा अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम उनके बच्चों ने किया है, जिसकी बहुत ही नए प्रकार के कार्यक्रम आज उन्होंने किए। जैसे छोटे बच्चों का चार्ली चैपलिन प्रोग्राम बहुत सुंदर था। इसके अलावा बहुत सारे नए नए कार्यक्रम उन्होंने किए हैं और जितनी भी प्रशंसा उन कार्यक्रमों की जाए वो बहुत कम होगी। वर्ल्ड पार्लियामेंट छोटे छोटे बच्चों ने की और इतने फ्लुएंट, फ्लॉलेस, बोल्ड, ल्यूसिड और एलोक्वेंट स्पीकर थे कि छोटे छोटे बच्चे दे वर स्पीकिंग सो फ्लुएंटली इन इंग्लिश। तो उनकी इंग्लिश देखकर तो मुझे लगा कि मेरे को भी यहाँ दाखला ले लेना चाहिए ताकि मैं भी कुछ इंग्लिश बोलना सीख सकूं। इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण था कि इसकी कोई भी कितने भी शब्दों में प्रशंसा की जाए वो बहुत कम होगी। सभी कार्यक्रम अत्यंत उच्च कोटि के थे और सब बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। टीचर्स ने जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया, उन टीचर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, हमारी स्कूल की एक प्रार्थना है, I bear witness, O my God, that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee. मैं साक्षी देता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। तुझे जानने के मानिए तेरी शिक्षाओं को जानूं और तेरी पूजा करूं, इसके मानी है उन शिक्षाओं पर चलूं। तो मनुष्य का जन्म परमात्मा ने इसलिए दिया है कि हम उस रचनाकार परमात्मा की शिक्षाओं को जाने, अर्थात उससे जाने माने उसकी शिक्षाओं को जाने और दूसरे उन शिक्षाओं का पालन करें। तो ये पूजा है। बाकी तो रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स आर नॉट वर्शिप एट ऑल। तो जो बहुत सारे लोग तरह तरह के रिचुअल्स करते हैं, कर्म कांड करते हैं, वो सब पूजा नहीं है। पूजा तो केवल एक है और वो ये है कि परमात्मा की शिक्षाओं को जाने और उन पर चले। परमात्मा अपनी शिक्षाओं को अपने संदेश वाहकों द्वारा, अपने मैसेंजर्स के द्वारा ये शिक्षाएं भेजता है। आज से 7,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम को अपने मैसेंजर के रूप में भेजा और उनका संदेश था
वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो उन्होंने जीवन की मर्यादा के लिए शिक्षा दी। मानव का जीवन मर्यादित हो, अमर्यादित न हो, ऐसे कोई आचरण या काम ना करे जो अमर्यादित हो। तो मर्यादा की शिक्षा आज से 7,500 परमात्मा ने राम के माध्यम से मानव जाति के पास भेजी। राम के चले जाने के एवं उनकी मृत्यु के 2,500 वर्ष के बाद, यानी आज से 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण का आगमन इस धरती पर होता है। उन्हें दिव्य लोक से एक पुस्तक प्राप्त हुई गीता की, जिसमें था न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। Punish your brother, your family members, punish them, but justice must be upheld. न्याय हर हालत में होना ही चाहिए, क्योंकि परिवार में या समाज में या संस्था में या विद्यालय में या फैक्ट्री में या शासन में जहाँ भी न्याय नहीं होगा वहाँ अन्याय होगा, और अन्याय होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी, समाज चल नहीं पाएगा, परिवार चलेगा नहीं, सब अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए न्याय की शिक्षा आज से 5,000 वर्ष परमात्मा ने भेजी। उनके चले जाने के 2,500 वर्ष के बाद, यानी आज से लगभग 2,500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का आगमन होता है, और बुद्ध जी ने जो शिक्षा दी वो थी सम्यक ज्ञान। उन्होंने कहा कि सबको बनाने वाला एक ईश्वर है, ऊंचा नीचा ये ऊंच नीच की भावना गलत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति की व्यवस्था ये गलत है। प्रत्येक प्राणी, चाहे संत हो, महात्मा हो, ऋषि मुनि हो या अवतार हो, जो जन्म लेता है उसमें 5 चीजों से उसका शरीर बनता है। क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। क्षित माने मिट्टी, क्षित जल, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, क्षित जल पावक, गगन समीरा, गगन तत्व है, और समीर वायु तत्व है। इन 5 चीजों से मनुष्य का शरीर बनता है। प्रत्येक प्राणी इन्हीं 5 चीजों से बना हुआ होता है। जिसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु के बाद भी ये 5 चीजों में उसका शरीर विलीन हो जाता है, चाहे वो उसको जला दे चाहे गाड़ दे, इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो सब बराबर है, एक मिट्टी से सब बने हुए, चाहे संत हो, महात्मा हो, अवतार हो, जो भी जन्म लेते हैं उन सब, वो सब बराबर है। ऊंच नीच की व्यवस्था गलत है। तो ये बुद्ध जी ने सम्यक ज्ञान दिया। बुद्ध जी की मृत्यु के करीब 500 वर्ष के बाद, यानी आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस धरती पर होता है। उन्हें दिव्य रूप से बाइबल की पुस्तक मिली, जिसमें था करुणा या दया, और यीशु मसीह ने जिन लोगों ने उनको कीले ठोक कर मार रहे थे उनके लिए प्रार्थना की परमात्मा से, हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि तो अबोध और अज्ञानी है, ये अपराधी नहीं है। इनके माता पिता ने, इनके शिक्षकों ने इन्हें आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान ही नहीं कराया, तो ये तो अज्ञानी है, ये अपराधी नहीं है। तो इतनी दया उनके अंदर थी, तो उन्होंने कहा इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जिनका जीवन करुणा में या दया में होगा। और यीशु मसीह की मृत्यु के करीब 600 बरस के बाद,
यानी आज से 1400 वर्ष पूर्व, 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद का आगमन इस धरती पर होता है। उन्हें कुरान शरीफ परमात्मा की ओर से दिव्य ज्ञान मिला, जिसमें थी पहली शिक्षा है खुदा रब्बुल आलमीन है, इस धरती का रब है, सृष्टि को बनाने वाला अल्लाह खुदा एक है, सबको जिसने सारी सृष्टि के प्रत्येक इंसान को बनाया, सब एक खुदा के बंदे हैं, एक अल्लाह ने सबको पैदा किया, सब भाई भाई है और भाईचारे का संदेश कुरान शरीफ में दिया गया है। उसमें कहीं नफरत की जगह नहीं है। कुरान शरीफ में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे किसी को भूखा हो तो पहले उसको खाना खिलाइए, तब उसके बाद आप खाना खाइए। रोज़ा, नमाज और ज़कात 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। रोज़ा में गर्मियों की सड़ी गर्मी में 30 अप्रैल से लगभग ये रोज़े शुरू होते हैं और पूरा मई के महीने में जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब ये रोज़े यानी फास्टिंग होती है। सूरज निकलने के पहले कुछ ले लेते या सूरज छिपने के बाद। दिन में एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे, चाहे कितनी ही प्यास लगी हो और चाहे कितना ही भूख लगी हो, एक कतरा रोटी का भी आप नहीं ले सकते। तो इतना कड़ा एक डिसिप्लिन परमात्मा की ओर से बनाया गया है कि आप रोज़े रखें, नमाज पढ़ें, 5 बार प्रार्थना करने के लिए हुक्म दिया गया है इस्लाम की तरफ से, 5 बार, ताकि आप दिन में ये सोचें कि कोई भी आपके ख्यालात में ऐसी चीज़ ना आवे जो कि खुदा की, अल्लाह की, परमात्मा की मर्जी के खिलाफ हो। तो इसलिए 5 बार प्रार्थना करने को उसमें कहा गया है। और ज़कात करने के लिए कोई भी गरीब हो, किसी जाति का हो, उनको यदि गरीब है तो आप उसको दान दीजिए और कुछ न कुछ उसकी मदद कीजिए। तो इस तरह की शिक्षाएं बहुत सारी इस्लाम में दी गई है। तो ये शिक्षा 1400 साल पूर्व आई और मोहम्मद साहब की मृत्यु के 900 बरस के बाद, यानी आज से 500 वर्ष पूर्व, गुरु नानक देव जी का आगमन इस धरती पर होता है। और गुरु नानक देव जी ने जो शिक्षा दी उसमें था, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे और एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक परमात्मा से सारा जग उत्पन्न हुआ है, किसी को भला या बुरा ना कहें। और नानक नाम चढ़ती कला, कब जब तेरे बाने सर्वत्र दा बना। नानक का नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग तो है, लेकिन एक शर्त है, कब जब तेरे बाने सर्वत्र दा बना, जब तेरे हृदय में संपूर्ण मानव जाति की भलाई की भावना होगी, तब नानक का नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जा सकता है। नानक की मृत्यु के 300 वर्ष के बाद, यानी आज से 200 वर्ष पूर्व, ईरान देश में बाउल्ला का आगमन हुआ। उन्हें 40 वर्षों तक जेल में रखा गया। उन्हें बहुत तकलीफें दी गईं। दोनों हाथों में रस्से बांध दिए जाते थे। उन्हें तांगे वाला तेहरान ईरान की सड़कों पर घसीटता था, तो लोग उनको पत्थर मारते थे, कंकड़ी मारते थे, धूल फेंकते थे और इस तरह उनको घसीटते थे। इसके अलावा भी बहुत तकलीफें दी गई। 4 देशों में देश निकाला हुआ, उन्हें डंजन में डाला गया, जहां पर कि राजा के महल का गंदा पानी आता था, बदबूदार पानी, उसमें वो रखा गया। गले में भारी भारी लोहे की जंजीरें डाल दी गई, पैरों में जंजीर डाली गई और वहीं पर दिव्य लोक से उन्हें संदेश प्राप्त होता है कि वे इस युग के
अवतार हैं और इस युग का कल्याण उन्हें करना है। तो उन्होंने जो बातें कही उसमें एक तो ये थी कि हमारे हृदय पवित्र हों। तो उन्होंने कहा कि माई फर्स्ट काउंसिल इज दिस, possess a pure, kindly and a radiant heart, that thine may be a sovereignty, ancient, imperishable and everlasting. हे प्राणी, मेरा प्रथम परामर्श तुझे ये है कि तू एक शुद्ध, दयालु और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर, ताकि इस पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो। दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो। O my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them thy great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their heart by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. उन्होंने सामाजिक नियम भी दिए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड की पार्लियामेंट हो, इस वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, वर्ल्ड की एक करेंसी हो, एक इकोनॉमिक ऑर्डर हो, वर्ल्ड का एक पॉलिटिकल ऑर्डर हो, एक भाषा हो वर्ल्ड की, जो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के साथ साथ पढ़ाई जाए। वर्ल्ड में एक तराजू बांटो, स्त्री और पुरुष समान है, कि न छोटा है न कोई बड़ा है। उन्होंने कहा, साइंस शुड बी बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और जो रिलीजन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जो साइंटिफिक नियम है उन पर रिलीजन होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे सामाजिक नियम दिए कि उन्होंने कहा कि जितने परिवार हैं संसार में, उसमें दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सब पति पत्नी, सब में हृदय पवित्र हो और एक हो जाए तो घर में स्वर्ग आ जाएगा। और यदि जरा भी किसी के मन में थोड़ी सी भी खटास है तो घर नरक बन जाएगा, तो स्वर्ग नहीं बनेगा। तो स्वर्ग और नरक हमारे घर में ही है, और इसका कोई गांव स्वर्ग का या नरक का नहीं है कि स्वर्ग में हम चले जाएं। तो स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग हमारे घर में है। यदि हमारे हृदय पवित्र हो और सब एक हो जाए तो घर में स्वर्ग आ जाएगा। और यदि हृदय में कोई दूरियां हैं, कोई नफरत है किसी के लिए, तो फिर घर नरक बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि घर में स्वर्ग लाने के लिए सभी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सबके हृदय एक हो जाए, और तब होंगे जब पवित्र होंगे। तो वो कहते हैं, माई फर्स्ट काउंसिल इज दिस, possess a pure, kindly and a radiant heart, that thine may be sovereignty, ancient, imperishable and everlasting. हे प्राणी, मेरा प्रथम परामर्श तुझे ये है कि तू एक शुद्ध, दयालु और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर, ताकि इस पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो। और दूसरे उन्होंने कहा कि एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु। ओ माय गॉड, यूनाइट द हार्ट्स ऑफ thy servants and reveal to them thy great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. तो ये शिक्षाएं बावला ने दी। तो ये जो शिक्षाएं, राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया,
कृष्ण ने न्याय की शिक्षा दी, बुद्ध ने समता की शिक्षा दी, यीशु मसीह ने करुणा की शिक्षा दी, मोहम्मद साहब ने भाईचारे की शिक्षा दी, नानक जी ने त्याग की शिक्षा दी और बाहुल्ला ने हृदय की पवित्रता और एकता की शिक्षा दी है। तो ये जितनी शिक्षाएं एक परमात्मा से आई हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। ये सारे अवतार एक परमात्मा की ओर से आए। सभी अवतारों ने जन्म लिया, सबकी मृत्यु हो गई। आज कोई भी अवतार जिंदा नहीं है, लेकिन परमात्मा कभी नहीं मरता, क्योंकि वो तो आत्म तत्व है। आत्मा को न तो तलवार काट सकती है, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। आत्मा अजर और अमर है। तो परमात्मा अजर और अमर है। जब सृष्टि नहीं थी, सूरज चांद धरती और आकाश कुछ भी नहीं था, तब भी परमात्मा था। और जब सृष्टि बना दी परमात्मा ने, तब भी परमात्मा है। और जब सृष्टि को मिटा देगा, प्रलय कर देगा, तब भी परमात्मा रहेगा। परमात्मा सदैव रहता है, क्योंकि वो आत्म तत्व है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो वो परमात्मा आज भी जिंदा है। उसे चाहे यहाँ पर एक बहुत सुंदर गाना बच्चों ने किया, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहे श्री राम, सबका मालिक एक है, अलग अलग है नाम। तो मालिक तो सबका एक है, नाम तो अनेक है। जितनी भाषाएं उतने नाम है। अब इसको हम अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं, बंगाली में इसे जल कहते हैं, और अनेक नाम है, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। जितनी भाषाएं उतने नाम है पानी के। इसी तरह परमात्मा के हजारों नाम हैं, जितनी भाषाएं उतने उसके नाम हैं, लेकिन वो एक ही है, दो नहीं है। परमात्मा एक है। राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, मोहम्मद को, नानक को, ईसा को, बाप को, बाहुल्ला को, जोरास्टर को, मोसेस को, अब्राहम को, भगवान महावीर को, इस सारे अवतारों को भेजने वाला एक परमेश्वर है। उसको आप अल्लाह कहें, खुदा कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, जिस नाम से भी पुकारे, वो एक ही है, दो नहीं है। नाम उसके अनेक है। और जो झगड़ा होता है वो इस नाम पर होता है कि तेरा अल्लाह बड़ा है कि मेरा भगवान। अरे अल्लाह भगवान तो एक ही बात है। अल्लाह कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, तो जितनी भाषाएं उतने नाम है उसके। तो इसलिए बच्चों को ये शिक्षा बचपन से देनी चाहिए कि बच्चे ये जाति धर्म और भेद भाव में ना पड़े, क्योंकि सारे प्राणियों का शरीर एक मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। चाहे आप जला दें, चाहे आप गाड़ दें, मिट्टी में ही मिलना है। तो ये शरीर मिट्टी से बना है सबका, चाहे अवतार हो, चाहे कोई भी संत और महात्मा, ऋषि मुनि हो या साधारण व्यक्ति हो, सबके शरीर मिट्टी से बने। इसलिए ऊंचा नीचा कोई भी नहीं है। बुद्ध जी ने कहा, समय ज्ञान दिया कि ये ऊंच नीच ये गलत है। तो ये शिक्षाएं बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रार्थना है, आई बियर विटनेस ऑफ माय गॉड द thou क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी। तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। तुझे जानना माने तेरी शिक्षाओं को जानूं, जो तूने अपने अवतारों के माध्यम से भेजी है। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, नानक, बाप, बाहुल्ला, जोरास्टर, मोसेस, अब्राहम, भगवान महावीर के द्वारा भेजी है। इन शिक्षाओं को जानूं, क्योंकि तूने एक ने भेजी है। ये सब मेरी भलाई के लिए। मेरा जीवन मर्यादित हो, राम ने आके कहा। कृष्ण ने कहा कि न्यायपूर्ण हो, तो ये भी मेरे लिए जरूरी है। बुद्ध ने कहा कि आपके अंदर ये ऊंच नीच की भावना न हो, कि सबको एक मिट्टी से बनाया है, प्राणी जितने भी संसार के। ईसा ने कहा करुणा हो, दया हो, और मोहम्मद ने कहा
कि भाईचारा हो, एक खुदा के बंदे भाई भाई हैं। और नानक जी ने कहा त्याग की भावना हो। 200 रुपये पिताजी ने दिए अपने बेटे को, नानक को, कि जाओ सौदा ले आओ और घर में लाके बेचा करो तो कुछ इनकम आएगी घर में। वो गए, रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो तड़प रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो इन्होंने पूछा नानक जी ने, तुम क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले हमें 15-15, 20-20 दिन से खाना नहीं मिला, हमारे पास पैसे नहीं है जो हम खाना खरीद सकें। तो इन्होंने 20 रुपए का खाना खरीद के सब में बांट दिया और लौट के आए तो पिताजी ने पूछा कि सौदा ले आए? तो हाँ पिताजी सौदा ले आया। तो क्या सौदा लाए हो? बोले मैं सच्चा सौदा लाया। ये क्या होता है? पिताजी वहाँ पे गरीब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उन्हें खाना नहीं मिला 15-15, 20-20 दिन से, तो मैंने खाना खरीद के बांट दिया। जानते हो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने मुझे दुआएं दी हैं, कहा कि नानक तुम्हें संसार के बहुत बड़े इंसान बनोगे, सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। पिताजी आप कहते हैं ना कि गरीबों को दुआएं कोई दे दे गरीब तो उसको भगवान पूरी करता है। क्या ये दुआएं इन गरीबों की भगवान पूरी करेगा? अवश्य पूरी करेगा। और बेटे तुम मेरे घर में एक अवतार पैदा हो गए हो। तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की अपने बेटे की। तभी से ये सच्चा सौदा, ये नानक जी ने शब्द दिया, सच्चा सौदा है कि मैं त्याग करूं गरीबों के लिए। तो ये शिक्षाएं बहुत अच्छी है। और उसके बाद है आई टेस्टिफाई एट दिस मोमेंट टू माई पावरलेसनेस एंड टू दाई माइट। तू शक्तिशाली है, मैं शक्तिहीन हूँ। तो मेरी शक्ति से क्या मतलब है? आध्यात्मिक शक्ति। राम 14 वर्ष के लिए पिता के एक वचन पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। राम ने कहा कि पिताश्री मेरी तो जीवन पर्यंत मैं कामना करता रहा कि पिताजी मुझे कोई आज्ञा दें। आज मेरा भाग्य खुल गया कि आपने एक छोटी सी आज्ञा दी, 14 वर्ष के लिए वनवास जाने की, और फिर वन में जाके तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं ऋषि मुनियों की वाणी सुनने का मुझे मौका मिलेगा, संत महात्माओं की वाणी सुनने का मौका मिलेगा। और वहाँ की जो गरीब जनजातियाँ हैं वन की, वो कैसे तकलीफ में रहती हैं, गुजारा करती हैं, उसे निकट से देखने का मौका मिलेगा। और जब मैं 14 वर्ष के बाद आके लौट के आऊँगा और राजा बनूंगा तो मैं उन गरीबों के प्रति न्याय कर सकूँगा, क्योंकि मैं तब देख के आऊँगा उनकी तकलीफों को। और संत महात्माओं की वाणी सुन करके मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। तो बोले कि मेरा तो कल्याण कर दिया। 14 वर्ष के लिए तकलीफें झेलने के लिए वन में राम ऐसे चले जाते हैं कि कोई कौशल्या माने रोकने की बहुत कोशिश की, अवध के निवासियों ने, अयोध्या के निवासियों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उनके सामने तो एक ही प्रश्न था कि पिता के वचन का पालन होना चाहिए और पिता के वचन की मर्यादा को उन्हें रखना था। क्योंकि कैकेयी ने 2 वर मांगे थे और दोनों वर पिता को देने पड़े। मंत्रा ने ऐसा उनको समझा दिया कैकेयी को कि कैकेयी ने 2 वर मांग लिए तो उन्हें देने पड़े। तो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को गद्दी देने के लिए उन्होंने कहा। तो कहने का तात्पर्य है कि राम में इतना ही शक्ति, आत्मा का बल आ जाना कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, एक मर्यादा के पालन के लिए, वचन की मर्यादा के लिए। और उसके बाद आप देखें तो सभी के जीवन में कष्ट ही कष्ट है। सारे अवतारों को, कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन से ही कंस ने कृष्ण को मारने के लिए, हत्या करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।
बुद्ध को मारने के लिए अंजुलिमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ईसा को मारने के लिए कीलों से ठोक दिया गया जीते जी, और बड़े बड़े हथौड़े लेकर ईसा को मार दिया गया। मोहम्मद साहब को 13 वर्षों तक मौत के साए में जीना पड़ा। बारबरस जंगली ट्राइब्स ऑफ अरेबिया उनको मारना चाहते थे क्योंकि वो गरीबों की हिमायत करते थे। ये बारबरस जंगली ट्राइब्स गरीबों की बहू बेटियों को उठा ले जाएं, उनके बच्चों को ले जाएं, उनके पशुओं को ले जाएं। तो ये मोहम्मद साहब उनकी मदद करते थे, बचाते थे उनको। तो ये कबीले चाहते थे, मोहम्मद साहब से कहते थे कि तुम इनको गरीबों का तुमने कोई ठेका लिया है क्या? तुम कौन होते हो इनको बचाने वाले? तो मोहम्मद साहब को बहुत तकलीफें दी गई। 13 वर्षों तक एक एक दिन उनको मौत के साए में जीना पड़ा। डेड ऑफ द नाइट में 13 वर्ष के बाद वो मक्का से मदीने गए। तो कातिलों ने जब देखा कि मोहम्मद मक्का में कहीं भी नहीं है तो उसके तलाश में ये लोग, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि आज मोहम्मद को मारना ही है, तो मोहम्मद को मारने की लिए तलाश करने चारों तरफ गए। तो इनमें से एक बहुत बड़ा दल मक्के से मदीने की तरफ गया। तो वहाँ पर जो मोहम्मद साहब के संग लोग थे उन्होंने देखा कि बड़ी भारी तादाद में कातिल लोग बड़ी बड़ी तलवारें लेके मारने के लिए आ रहे। तो अबीसीनिया भाग गए। इन लोगों ने अबीसीनिया तक पीछा किया। कहने का तात्पर्य है कि मोहम्मद को बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई। तो इतना आत्मा का बल कहाँ से आ गया मोहम्मद साहब में? ये खुदा जब देता है, परमात्मा देता है तो आत्मा का बल दे देता है। इतना बल उनमें आ गया। आप देखें तो गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में चुन दिया गया और जीते जी दीवार में उनको चुन दिया गया। और उसके बाद आप देखें तो बावला को 40 वर्षों तक जेल में रखा गया, मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, जेलों में 4 देशों में देश निकाला हुआ। बहुत तकलीफें उनको दी गई, लेकिन दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने एक नया ज्ञान दिया भाई धर्म का, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभु। सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने कहा है। तो ये शिक्षाएं मिली। अब मैं इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आपको बताऊंगा। यहाँ एक बालक है, ए चाइल्ड और यूथ इज द होप एंड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। ये हमारा जो बच्चा है, इसके मस्तिष्क में कौन से विचार माता पिता और शिक्षक बाल्यावस्था से भर रहे हैं। तो ये बच्चा हमारी आशा की किरण है और ये प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर है। भविष्य की ये प्रॉमिस है कि भविष्य में इस बच्चे का कैसा जीवन बनेगा। वो जो विचार आज ये 2 कानों से सुन रहा है, 2 आंखों से देख रहा है, ऑडियो और विजुअल के द्वारा जो अनुभूतियाँ इसके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में एकत्रित हो रही हैं, तो वही जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो धीरे धीरे करके अवचेतन मन से चेतन मन में या सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आने लगेंगी और बालक ठीक उसी प्रकार का आचरण करने लगेगा। यदि माता पिता को घर में प्रार्थना करते देखता है तो ये बालक बड़े होकर प्रार्थना करने लगेगा, और यदि माता पिता को झगड़ा करते देखता है तो ये बालक बड़े होकर झगड़ा करने लगेगा। तो ये बहुत कुछ करके 2 आंखों से देखकर 2 कानों से सुनकर ये बच्चा जो अपने मस्तिष्क में संजो लेता है वही उस तरह का बालक बन जाता है। इसलिए
बाल्यावस्था में जो प्रथम शिक्षक है वो माता पिता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है सावधानी से अपना व्यवहार करें ताकि इस बात को देखें कि बच्चे के ऊपर कौन से संस्कार पड़ रहे हैं, कौन से विचार पड़ रहे हैं। यहाँ पर है if one child or youth is made a total quality person, TQP, he can change the world and unite it. एक बच्चे को भी हम टोटल क्वालिटी पर्सन बना दें या टोटल क्वालिटी मैनेजर बना दें तो ये बच्चा सारी दुनिया को बदल देगा। तो इसके लिए भौतिक शिक्षा, मटेरियल एजुकेशन, ह्यूमन एजुकेशन और डिवाइन एजुकेशन, तीनों तरह की शिक्षा काफ़ी है। इसको भौतिक ज्ञान यानी अंग्रेजी, भूगोल, गणित, विज्ञान, जितने भी ये भौतिक ज्ञान है, कंप्यूटर साइंस, ये सब का ज्ञान उच्च कोटि का कराना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन एजुकेशन, मानवीय शिक्षा, घर में दादा दादी के चरण स्पर्श करना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, बड़े भाई बहन का आदर करना, छोटे भाई बराबर वालों से मित्रता का भाव, छोटों को प्यार करना, तो घर में ही ये शिक्षा, मानवीय शिक्षा मिलनी चाहिए। और घर में डिवाइन एजुकेशन, दिव्य ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान है वो भी मिलना चाहिए। इसके अलावा ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है। जब ईश्वर ही एक है तो उसका धर्म भी एक है और धर्म उसका एक है। और धर्म क्या है? ईश्वर की जो शिक्षाएं, जो अपने संदेश वाहकों के द्वारा, अपने मैसेंजर्स ऑफ गॉड के द्वारा, राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, नानक, ईसा, बाप, बाउल्ला, जोरास्टर, मोसेस, अब्राहम के द्वारा जो शिक्षाएं भेजी हैं, उन शिक्षाओं को जानना ही ईश्वर को जानना है और उन शिक्षाओं पे चलना, यानी हमारा जीवन मर्यादित हो, हमारा जीवन न्यायप्रिय हो, हमारा जीवन जाति पाति में विश्वास ना करे, हमारा जीवन करुणामय हो, दयामय हो, हमारा जीवन में भाईचारा, सबको हम बराबर माने, भाईचारे की भावना हो, हमारे जीवन में त्याग की भावना हो, हमारे जीवन में पवित्रता हो और एकता हो। तो ये जो सारे गुण हैं जो परमात्मा की ओर से आए हैं, ये सब हमारी गॉड इज वन, तो ये रिलीजन इज वन, यही हमारा धर्म है। प्रभु की इच्छाओं को जानना और उन पर चलना। मैन काइंड इज वन, मानव मात्र एक है। बच्चे को गुड और स्मार्ट, स्मार्ट तो हमारी शिक्षा बनाती है, लेकिन गुड माता पिता को बनाना चाहिए। तो गुड और स्मार्ट दोनों होगा तो प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति का गौरव बनेगा बच्चा। ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड, ईश्वर का उपहार बन जाएगा मानव जाति के लिए। पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये बच्चा धरती की रोशनी बन जाएगा, पोटेंशियल लाइट। इसके लिए नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन, एलोक्वेंट स्पीच, ये चार हमारे CMS के पिलर्स ऑफ एजुकेशन है। तो ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, रटा हुआ नहीं बल्कि समझा हुआ, हर विषय का ज्ञान। विजडम, बुद्धिमत्ता, यह है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली, उस ज्ञान का सदुपयोग, प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसी ऑफ सिचुएशन। तीसरी चीज है स्पिरिचुअल परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो, एलोक्वेंट स्पीच हो। और आज बच्चों ने जो वर्ल्ड की पार्लियामेंट करी, उसमें जो एलोक्वेंस हमने देखी बच्चों की, वो अद्भुत थी, आश्चर्यजनक थी। और उसके लिए संविदा अधिकारी दीदी जी को, प्रिंसिपल दीदी जी को और उनकी सारी टीचर्स को और बच्चों को जितनी भी बधाई दी जाए वो बहुत कम होगी। दे वर फ्लुएंट, दे वर फ्लॉलेस, they were bold, they were lucid, they were expressive, and they were highly eloquent speeches बच्चों ने दिए। तो eloquent speech बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो चार हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यूनिवर्सल वैल्यूज, ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, विश्वव्यापी जानकारी। आज यहाँ पार्लियामेंट में देखा आपने ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, मानव मात्र की सेवा, एक्सीलेंस इन ऑल थिंग, हर चीज में बच्चे
एक्सीलेंट हो, पढ़ाई लिखाई में हो, हैंड राइटिंग में हो, व्यवहार में कुशल हो, तो एटिकेट्स उनके अच्छे हो, मॉरल्स अच्छे हो, तो एक्सीलेंस इन ऑल थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों को माँ बाप को सिखाना चाहिए, लीडरशिप स्किल, फुल कमिटमेंट एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट, पूरे मनोयोग से जो भी काम करें पूरे दिल लगा के करें, पूरे मनोयोग से करें। हर बच्चे को अजाइल और एक्टिव गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड, ईश्वर का उपहार बनाना चाहिए, पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एजाइल और एक्टिव। हर बच्चे को एजाइल बनाएं, एक्टिव बनाएं, फार साइटेड बनाएं, विजनरी बनाएं, ऊंचे ऊंचे सपने लेने वाला, गोल सेटिंग कॉम्पिटेंसीज, अल्टीमेट गोल, लॉन्ग रेंज गोल, short range goal, immediate goal, goal at hand, all the goals of life should be connected to each other. The goal setting competencies, humble and tolerant, humility exalted man to the heaven of glory and power, while pride abases him to the depth of wretchedness and degradation. So humility and tolerance, God will increase the reward of them that endure with patience in the path of God. If anyone revile you or trouble touch you in the path of God, be patient and put your trust in Him who heareth and who seeth. तो ये humble and tolerant, self-disciplined बच्चों को बनाइए, इमोशनली स्टेबल। छोटी छोटी बात में बच्चे फ्लेयर अप कर जाते हैं, मम्मी पापा से लड़ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। नोबल एंड लॉ अबाइडिंग बनाएं, कंसल्टेशन बच्चों को सिखाएं, परामर्श करना, बहस मुबाह से नहीं, स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति बड़े काम करने की, लॉजिकल टेम्परामेंट बच्चों का हो, क्यूरियस और इमेजिनेटिव हो, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट हो। यहाँ पर एक दिव्य ये लोक है परमात्मा का, यहीं से सारी किताबें आई हैं। ये बालक इन्हीं से जुड़ना चाहता है। 5000 वर्ष पूर्व गीता आई जिसमें न्याय की शिक्षा है, 2500 वर्ष पूर्व त्रिपिटक आई बुद्ध की आत्मा में जिसमें इक्वलिटी है, सब समय ज्ञान है, और 2000 वर्ष पूर्व बाइबल आई एक ही परमात्मा से, तो उसमें करुणा और दया की शिक्षा है। वहीं से 1400 वर्ष पूर्व एक ही परमात्मा से कुरान शरीफ आई, उसमें भाईचारा है। और वहीं से 500 वर्ष पूर्व, ये 550 गलत है, 500 कर लीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहब आया नानक जी की आत्मा में, और वहीं से 200 वर्ष पूर्व किताब एकदस आई बाउल्ला की आत्मा में। उनकी कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए उनके बेटे अब्दुल बहा की तस्वीर लगाई जो उनकी अपने पिता की शिक्षाओं के इंटरप्रेटर थे। तो उसमें था यूनिटी ऑफ आर्ट। तो ये टोटल क्वालिटी पर्सन बनने के लिए और टोटल क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए, डिवाइन सिविलाइजेशन धरती पर स्थापित करने के लिए ये दिव्य लोक से अपने आप को बच्चे ने जोड़ा है। बाउला ने 3 बातें और कही हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड द फोस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंग्स्ट मैन। तो बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द रिलीजन, जितने भी ऊपर धर्म है, इनका जो मूल उद्देश्य है, द बेसिक पर्पस of all the religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race. मानव हितों की सुरक्षा करना और मानव मात्र में एकता पैदा करना, and to foster the spirit of love and fellowship amongst men. मानव मात्र में आपसी प्रेम और सद्भावना और मित्रता कायम करना, यही हर धर्म का उद्देश्य है, जितने धर्म हैं। दूसरे उन्होंने कहा कि ये परमात्मा ने एक दिन में सब नहीं भेजे, एक दिन में ये 5000 वर्ष पूर्व ये गीता भेजी, तो 2500 वर्ष पूर्व त्रिपिटक भेजा, तो 2000 वर्ष पूर्व बाइबल भेजी, तो 1400 वर्ष पूर्व कुरान शरीफ भेजी, तो 500 वर्ष पूर्व नानक जी की आत्मा में गुरु ग्रंथ साहब आया, तो 200 वर्ष पूर्व किताब एकदस आई। तो ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन है।
परमात्मा ने रिवील किया प्रोग्रेसिवली. तो प्रोग्रेसिव रेवलेशन मीन्स रिलीजियस ट्रूथ इज रिवील्ड बाय गॉड प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली ओवर ए टाइम. ये सारा दिव्य ज्ञान, सारी पुस्तकें आई हैं. तो प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली over a time through a series of divine teachers, and their teachings are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. तो ये जितने भी किताबें हैं ये सब एक प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन है, साइक्लिकली और प्रोग्रेसिवली आई है over a time through a series of divine teachers, and their teachings are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. युग की आवश्यकता के अनुसार, युग की जैसी आवश्यकता है और जिस स्थान की आवश्यकता है जहाँ पे अवतार को दिव्य ज्ञान दिया है, उस स्थान की आवश्यकता के अनुसार ये शिक्षाएं आई हैं. तीसरी बात उन्होंने कही, ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड. ये जितनी भी रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड ये रिवील किए हैं परमात्मा ने. ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग. इनमें कोई त्रुटि नहीं है. एंड करेक्टेड विजडम. परमात्मा ने सारी विजडम करेक्ट करके उस युग के लिए जो आवश्यक थी, जैसे गीता में भर दी, त्रिपिटक में भर दी, बाइबल में भर दी, कुरान शरीफ में भर दी, गुरु ग्रंथ साहब में, किताब 1:10 में. तो ये ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग एंड करेक्टेड विजडम दैट आर सेंट बाय वन गॉड. एक ईश्वर ने भेजी है एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज, युग युग की आवश्यकता के अनुसार, टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैनकाइंड एंड टू क्योर द मेलोडीज ऑफ द एज. युग युग के दुखों को दूर करने के लिए. यहाँ पर एक बल्ब है, पावर हाउस से जुड़ गया तो रोशनी आ गई, और ये तार टूट गया तो अंधेरा आ गया. यहाँ एक बालक है, इस बालक को माता पिता ने और टीचर्स ने ईश्वर से जोड़ दिया, दिव्य लोक से, जहाँ से गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, किताबें, ये सारी किताबें आई हैं. तो बच्चा क्या बनेगा? रैशनल, विचारवान. और क्या बनेगा? वाइज, बुद्धिमान. और क्या बनेगा? गॉडली, ईश्वरीय. और क्या बनेगा? गुड, अच्छा इंसान. और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी पर्सन, TQP. और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी मैनेजर, TQM. लाइक ए डिवाइन एंजल, एक देवदूत की तरह ये बन जाएगा. ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी. ये मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान बन जाएगा. और कहीं ये तार टूट गया, यहाँ 2 बच्चे हैं, ये ईश्वर से नहीं जुड़े, इन्होंने अपना तार इससे ईश्वर से नहीं जोड़ा, तो इनके माता पिता ने नहीं जोड़ पाए, तो ये बच्चे क्या बनेंगे? इरैशनल, अविचारवान. और क्या बनेंगे? अनवाइज, अबुद्धिमान. और क्या बनेंगे? अनगॉडली, अनीश्वरीय. और क्या बनेंगे? बैड, बुरे इंसान बनेंगे. टोटली मिसगाइडेड पर्सन, कोई भी मिसगाइड कर देगा. TMP. एंड टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, TMM. लाइक ए एनिमल, जानवर की तरह ये बन सकते हैं. ए बैड ह्यूमन बीइंग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी. ये बच्चों ने एक दूसरे का जबड़ा पकड़ लिया है, एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं. भौंकता हुआ कुत्ता इनका बार्किंग डॉग इनका गुरु है, उसी से सीख रहे हैं कि कैसे गालियां दी जाती हैं. तो बच्चों को शुरू से ईश्वर भक्त बनाना चाहिए, ताकि यदि ईश्वर भक्त नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे बुराई में फंस सकते हैं. बच्चे के 3 क्लासरूम हैं. पहला क्लासरूम होम है, फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है. दूसरा क्लासरूम स्कूल और यूनिवर्सिटी है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है. तीसरा क्लासरूम बच्चे का समाज है, थर्ड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है. यहाँ पर जो पहला हमारा है घर, इसमें आप देखें तो मम्मी, पापा, बेटा और बेटी सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं. तो फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करता है, मिलजुल कर प्रगति करता है, उसमें टूटन नहीं आती. घर में गीता भी है, कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है. इस घर के ऊपर दिव्य प्रकाश परमपिता परमात्मा का है, और सारे अवतारों की शिक्षाएं
जो परमात्मा ने भेजी हैं वो सब किताबें भी हैं। तो इन बच्चों को ये सब ज्ञान कराया जाता है। ऐसा घर होना चाहिए 21वीं शताब्दी में। और स्कूल कैसा हो? स्कूल और यूनिवर्सिटी इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, spiritual direction, guidance and leadership to students, their parents and the society in general. Let us make every child or youth both good and smart. हम हर बच्चे को good और smart बनाएं. A gift of God to mankind, a pride of the human race and a potential light of the world. इसे ईश्वर का एक उपहार बनाए मानव जाति के लिए, प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस, मानव जाति का गौरव बनाए, और ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन, एलोक्वेंट स्पीच, ये 4 हमारे 4 पिलर्स ऑफ सीएमएस एजुकेशन है। 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे सीएमएस के यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स। तो ये 8 गुण बच्चों को देना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई तो हो लेकिन प्रार्थना भी हो, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये समाज में ये ईश्वर की ओर से, एक ईश्वर की ओर से सारी किताबें आई हैं। तो संत और महात्माओं को भी हमें ऑल पीपल शुड प्रे टुगेदर सिंस देयर इज ओनली वन गॉड। ईश्वर तो एक ही है। तो ये जो दूरियां हैं ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस आर द अर्जेंट नीड ऑफ द सोसाइटी। गांधी जी ने कहा था, इफ वी आर टू टीच द रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, इफ वी आर टू कैरी आउट ए रियल वार अगेंस्ट वार, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और पॉलो फेरी ने कहा था, एजुकेशन चेंजेस द पीपल एंड पीपल चेंज द वर्ल्ड। विक्टर ह्यूगो ने कहा था, देयर इज वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन ऑल द armies in the world, and that is an idea whose time has come. Balanced education of all the 3 realities of life, that is material, human and divine, is the idea whose time has come. मैं इन शब्दों के साथ आज की आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी लंबी वार्ता इतने ध्यान से सुनी। और मैं यहाँ की प्रिंसिपल संविदा अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अत्यंत सुंदर कार्यक्रम कराने के लिए। इस विद्यालय का परीक्षा फल रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। इस विद्यालय के बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं, हर विषय में तेज हैं। हर चीज़ दीदी उनके सोशल और सामाजिक विकास और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। तो जितना भी बधाई दी जाए वो कम होगी। Thank you, sir. Your words of wisdom never cease to amaze us.
It is absolutely true that the name of God may differ from language to language, but the essence remains the same. Thank you, sir. The true beauty of music is that it connects people, and that's exactly what Associated Board of Royal School of Music is doing. ABRSM is the United Kingdom's largest music education body, one of its largest music publishers, and the world's leading provider of music exams, offering assessments in over 93 countries every year. Our students at Aliganj 2 now have the opportunity to learn sheet music or to play an instrument. Extracurriculars are an important part of students' life. We present before you all our budding musicians, Mr. Abhay, Mr. Anadi, and Mr. Aviril, who will display their passion through this performance. The true beauty of music is that it connects people, and that is exactly what Associated Board of Royal School of Music is doing. We present before you all our budding musicians, Mr. Abhay, Mr. Anadi, and Mr. Aviril, who will display their passion through this performance. Put your hands together for this extraordinary musical performance, everyone.
That was Master Aviral. We have Master Anadi. That's Master Abe. Well, ladies and gentlemen, I am sure their performance has changed your perception about musical education. This shows their motivation and dedication towards this art. Round and round the garden like a teddy bear. One step, two step, tickle you everywhere. Nursery rhymes are the most important part of education and the most relaxing too. A nursery rhyme shapes your bones and nerves and it shapes your mind. It reminds you what it is to be a child. So let us enjoy this journey down the memory lane through these rhymes sung by the pre-primary students. Dear parents, coming down once again for these little ones. Clap your hands, clap them just like me. Clap your hands, clap them just like me. Clap your hands, clap them just like me. Clap them just like me. Touch your shoulders, touch them just like me. Touch your shoulders, touch them just like me. Touch
Dear parents, I think they deserve a very big round of applause. I'm sure each one of you must have relived your childhood days. These tiny tots have proved that children have a feeling for rhythm in words. Hope you all enjoyed reliving your childhood days. Put your hands together to encourage and appreciate these bundles of joy. Music of India includes the diversity of historical genres of folk and classical music. It was in India, where Persian poetry and Indian music met, that the art of Qawwali was born. Qawwali is enlightenment, the lines and verses which come out from the Qawwal soul directly reaches and stirs your mind and soul. The next presentation will stir your soul and open your eyes, where the students teach you all a lesson of life. Be always aware that none of your words or deeds ever make your parents sad. Follow the path of truth. Should anyone give you a choice between an opportunity to render a service to God and service to them, choose to serve them. And let such service be a path leading you to God. I request you all to give these students a thundersome ovation as they present before you Qawwali. As the students are quite busy and occupied getting ready, let us enjoy a few quotes from the Spiritual Education Quotes for Children book. Children are even as a branch that is fresh and green. They will grow up in whatever way we train them. It is extremely difficult to teach the individual and refine his character once puberty is past. By then, as experience hath shown, even if every effort be exerted to modify some tendency of his, it will availeth nothing. He may perhaps improve somewhat today, but let a few days pass and he forgetteth, and turneth backward to his habitual condition and accustomed ways. Therefore, it is in early childhood that a firm foundation must be laid. While the branch is green and tender, it can be made straight. Our meaning is that qualities of the Spirit are basic and divine foundation of us, and adorn the true essence of man. And knowledge is the cause of human progress. Teachers of God must attach great importance to this matter and carry it forward with enthusiasm and zeal. God has given man the eye to investigation by which he may see and recognize truth. He has endowed man with ears that he may hear the message of reality, and conferred upon him the gift of reason by which he may discover things for himself. This is his endowment and equipment for the investigation of reality. Man is not intended to see through the eyes of another, hear through another's ears, nor comprehend with another's brain. The attainment of the most great guidance is dependent upon knowledge and wisdom,
and on being informed as to the mysteries of the holy words. Wherefore must the loved ones of God, be they young or old, be they men or women, each one according to his capabilities, strive to acquire the various branches of knowledge and to increase his understanding of the mysteries of the holy books and his skill in marshalling the divine proofs and evidences. Now that the students are ready, let us welcome them with a thunderous ovation as they present before you Kavali. Jai Jagat children, today we will be studying a very important chapter of life. So are you all ready? Yes, we are. माई, बापू, हमको भी पढ़ाई करनी है सीएमएस जैसे स्कूल में। हम अभी देख कर आए कि कितने अच्छे से मैम जी बच्चों को पढ़ा रही थी। हमको भी पढ़ना है माई, बापू, हमको भी स्कूल जाना है और अपना नाम बनाना है। बेटा, कैसे पढ़ाएं तुमको इतनी बड़ी स्कूल में? यहाँ तो बेटा 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। इस गरीबी में कैसे पढ़ाएंगे तुम सबको? तो फिर हमको पैदा ही क्यों किया जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते थे? बताइए, भीख मांगने के लिए? अरे अरे, ये तुम कैसे अपने माँ बाप से बात कर रहे हो? अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए। अरे आप बड़े लोग, आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तभी ये सब बातें करना आपके लिए आसान है। आपके माँ बाप कितने अच्छे हैं जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है। हमसे पूछिए, हम तो वो लोग हैं जिनको अच्छी शिक्षा पर भी हक नहीं। दोस्त, तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। माँ बाप किसी के खराब नहीं होते। क्या तुमको पिता का महत्व पता है? पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। और माँ? माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। तो माँ की यह कथा अनादि है, अध्याय नहीं है। और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो यह याद रखना मेरे प्रिय दोस्त, माँ बाप की कमी कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। जी, आप सही कह रही हो। और दोस्त, तुम परेशान ना हो, क्योंकि हम अपने रिस्पेक्टेड फाउंडर्स डॉक्टर जगदीश काली जी
और डॉक्टर भारती गांधी जी के आशीर्वाद से हर घर शिक्षा का अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम पिछड़े से पिछड़े वर्ग के बच्चों को बिना किसी शुल्क के अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फाउंडर्स मानते हैं कि अच्छी शिक्षा पर सबका अधिकार है, जिससे हमारे जय जगत और वसुधैव कुटुंबकम का नारा हर घर में गूंजे। अरे देखो, बेल बज गई। चलो, आज तुम्हारी क्लास है, तुमको मैं अपनी टीचर से मिलवाती हूँ। Mom, look, today we have new children in the class, and now they will be studying with us. Jajga, dear children, so as this is your first class, so let me teach you a very important lesson of life. बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। ये माता पिता और विद्यालय तथा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों के संस्कार ही हैं कि बच्चे स्वयं शिक्षित होने के साथ साथ शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की प्रगति में पग पग आगे बढ़ते हुए हमारे विद्यालय के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी और आदरणीय डॉक्टर भारती गांधी जी के वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार कर रहे हैं। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे माता पिता को कष्ट हो या उनका दिल दुखे। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। भुला की नींद अपनी सुलाया हमको, भुला की नींद अपनी सुलाया हमको, गिरा के आंसू आपने हंसाया हमको। दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। आपके प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है, बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। ये है राज़ी तो नबी राज़ी है, राज़ी है खुदा, ये है राज़ी तो नबी राज़ी है, राज़ी है खुदा, ये है राज़ी तो नबी राज़ी है, राज़ी है खुदा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। दुनिया नई बनानी है, हमें दुनिया नई बनानी है, जबकि सारे बच्चों में शिक्षा की ज्योत जलानी है। दादा दादी नाना नानी से सुननी हमें कहानी है, माता पिता की सेवा करना
सबने मिलकर ठानी है। उनकी ममता ने हर हाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। उनकी ममता ने हर हाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। रहमते मौला से कुछ कम नहीं साया इनका, रहमते मौला से कुछ कम नहीं साया इनका, रहमते मौला से कुछ कम नहीं साया इनका। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपनी माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपनी माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मुसीबतें कितनी भी हो, मुसीबतें कितनी भी हो, हम नहीं डरने वाले। हर समय बैठे हैं हमारे माता पिता के रूप में प्रार्थना करने वाले। हर मुसीबत से बचाया ये करम है कि नहीं, बोलना तुझको सिखाया ये करम है कि नहीं। हर मुसीबत से बचाया ये करम है कि नहीं, बोलना तुझको सिखाया ये करम है कि नहीं। कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता, कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता, कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बेशक हो जाओ पर्वत से ऊंचा, बेशक हो जाओ पर्वत से ऊंचा, माँ बाप का सिर कभी झुकाना मत। माँ बाप के बिना दुनिया में कोई नहीं, इनका मान कभी घटाना मत, इनका मान कभी घटाना मत। तुझको इंसान बनाया, तुझे तालीम भी दी, कभी देखी नहीं इनकी मोहब्बत में कमी। तुझको इंसान बनाया, तुझे तालीम भी दी, कभी देखी नहीं इनकी मोहब्बत में कमी। क्या दिया तूने मगर इनकी मोहब्बत का सिला, क्या दिया तूने मगर इनकी मोहब्बत का सिला, क्या दिया तूने मगर इनकी मोहब्बत का सिला। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपनी जन्नत को खुदा के लिए तो सपना बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए तो सपना बना। अपनी जन्नत को खुदा के लिए तो सपना बना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। We are so busy growing up that we often forget their parents are also growing old. Today, on behalf of all the children of Aliganj too, we accept that all that we are or hope to be, we owe it to our parents. Thank
Thank you so much. I am profoundly elated to invite our respected founder director, Dr. Bhati Gandhi. She has been working incessantly on modernizing the old legacy of our school while staying deeply connected with the roots. Ma'am, please come up on the stage and bless us with your words of wisdom. चरणों में सादर प्रणाम। आप सब लोग बच्चों के पहले शिक्षक हैं। माता पहली शिक्षक, पिता नंबर 2 के, और हम तीसरे नंबर के गुरु घंटाल। तो आप समझ लीजिए हम क्या हैं, तीसरे नंबर के। तो आप जब यहाँ आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो पेड़ हैं आप जिस पर मीठे और रसीले फल लगे हैं बच्चों के, और अपने रसीले फल, मीठे फल जो आप हमें देते हैं तो हम उन्हें और अच्छा चमकाते हैं। तो असली तो आप ही हैं। जैसे बच्चे के अंदर पहले शिक्षक माता ने संस्कार डाल दिए। एक ब्रांच की माता जी से मेरी लड़ाई हो गई। अब आप कहेंगे क्यों लड़ती हैं आप? अरे भाई वो टीचर नंबर 1, हम टीचर नंबर 3, तो लड़ाई नहीं होगी क्या? अपनी गुफ्तगू नहीं होगी क्या? तो हमने उनके बच्चे से पूछा, फंक्शन खत्म हुआ, बाहर गेट पे बैठे थे हम, तो हमने उससे बच्चे से पूछा अपनी स्कूल की प्रार्थना सुनाओ। बच्चे ने सुना दी। I bear witness, oh my God, that thou hast created me to kill thee. भगवान को मार डालना है? क्या करना है? अभी एक पेरेंट की मैं बहुत तारीफ करूंगी, उन्होंने अपने शोर करते हुए बच्चे को डांटा। ये है पिता। जब कभी किसी सभा सोसाइटी में जाओ तो पिताजी सिखा रहे हैं ऐसे बैठो, और चिल्लाना है तो बच्चे के मुंह पे हाथ रख लीजिए। तो कहा क्या मैंने? मार डालना है भगवान को? क्या है आपकी प्रेयर? I bear witness, oh my God, that thou hast created me to टीचर ही बोलते, to know thee,
भगवान को पहचानने के लिए भगवान ने हमें पैदा किया है। तो भगवान को कैसे पहचानेंगे? दो रूप होते हैं, सगुण पूजा और निर्गुण। निर्गुण में तो भगवान दिखाई नहीं देते और सगुण में अवतार होते हैं। तो निर्गुण को हम नहीं मानते, क्योंकि कठोपनिषद में कहा है भगवान वो अस्तित्व है जिसकी वजह से कि ये आंखें देखती हैं पर उसे नहीं देख सकती। भगवान वो अस्तित्व है जिसकी वजह से ये कान सुनते हैं पर उसे नहीं सुन सकते। भगवान वो अस्तित्व है, बच्चों चू 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 करना पिताजी की इज्जत खराब करना है, और माताजी की तो खास तौर से, क्योंकि पहली टीचर माता। ये दिमाग उस परमात्मा को सोच और समझ नहीं सकता। तो इसलिए अवतार आए, भगवान ने भेजे। हिंदू लोग राम और कृष्ण को अवतार मानते हैं, इस्लाम के परम पूजनीय मोहम्मद साहब को मानते हैं, सिख लोग गुरु नानक देव जी को मानते हैं इत्यादि। तो आपके बच्चे को ये प्रथम गुरु माता ने सिखाया नहीं था। तो मैंने उनसे कहा, माता जी आपके घर में गीता बोले है तो कहाँ रखी है? ऊपर रखी है। आप पढ़ती है बच्चे के लिए, अपने लिए नहीं? वो तो नहीं पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा आप राक्षस है, मैं राक्षसों के बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी। आप जुलाई से अपने बच्चे को मेरे स्कूल में नहीं भेजिएगा। फिर दूसरे बच्चे से पूछा, वो किसी एक दूसरे धर्म का था। हमने पूछा ही नहीं, वो बच्चा खुद ही बोल पड़ा कि मैं भगवान को जान सकता हूँ अवतार के जरिए, और पूजा करने का मतलब है, उसने एक उनका नाम बता दिया मोहम्मद साहब का, और कहा पूजा करने का मतलब है उनकी आयत पढ़ दी कोई। तो माता जी वहीं खड़ी थी। माता जी ने कहा नहीं बेटे, तुमने इसमें ये शब्द दो गलत कर दिए। वो थी असली माता जी, जिन्होंने बच्चे को, उसको मैंने तुरंत 500 रुपए दिए, क्योंकि अगर माता पिता अपने बच्चों को अच्छा नहीं बनाना चाहते हैं तो मेरे स्कूल में वो नहीं पढ़ाए जाएंगे। मैंने अपने माता पिता को बच्चों के बस्ते में रख करके किताब भेजी थी। इस साल के पिछले साल मेरे यहाँ 55,000 बच्चे थे, अब तो 60,000 बच्चे हैं। तो 20 रुपए के हिसाब से वो 1,10,000 में किताब छपी थी। मैंने सारे बच्चों को बस्ते में माता पिता के जरिए, माता पिता के लिए किताब भेजी थी। शायद ही किसी माता पिता ने बस्ते से निकाली होगी, या बच्चे ने दी होगी, या पढ़ी होगी। तो मैं ऐसे माता पिताओं से बहुत नाखुश हूँ। मैं उनके बच्चे नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये बच्चा का खाली रोटी कमाने सिखाने का स्कूल नहीं है, ये बच्चों का जीवन बनाने का स्कूल है। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको बता देती हूँ, अगर आपके बच्चों ने प्रेयर का मीनिंग सही नहीं बताया तो हमने एक डेफिनेशन सुनी है, कवि ने लिखी है। क्या लिखी है कवि ने डेफिनेशन? टीचर वो खूंटा है जिस पे 40 बैल बंधे हैं। तो एक साल में टीचर को 40 बैल को ट्रेनिंग देनी है, और पहली ट्रेनिंग ये देनी है कि बताए कि परमात्मा को जानने के लिए उसके अवतार को जानना है, और परमात्मा की पूजा करने के लिए उनकी शिक्षाओं पे चलना है जो उनकी पवित्र पुस्तक में लिखी हैं। और अगर ये टीचर नहीं जानेगी तो साल के अंत में वो खूंटा हिल जाएगा। धन्यवाद। जय जगत।
Thank you, ma'am, for your kind words. We are grateful for your time and effort to share your thoughts. What a wonderful performance to begin our next program. I think this said enough about what our next performance is going to be. Well, the existence of oneness, despite numerous distinctions, is the meaning of unity in diversity. India is the shiniest example when it comes to unity in diversity. People of all religions, creeds, dialects, cultures, and lifestyles coexist peacefully under one roof. We can never forget the liberation movements led by Indians of all faiths, religions, and castes to establish India as an independent and united country. In a society that worships love, freedom, and beauty, dance is sacred. It is a prayer for the future, a remembrance of the past, and a joyful exclamation of thanks for the present. When we dance, we touch the essence of who we are and experience the unity between spirit and matter. Without wasting another second, let us proceed with our next performance. Give it up for the state dance performance, everyone. કેમ છો? મજામાં છો? Gujarat is a flourishing state with cultural diversity. It is vibrant with its true colors of rich heritage and cultural traditions. ये नरसिंह मेहता की धरती, तारक मेहता छाए, सोमनाथ, द्वारकापुरी और अक्षरधाम सुहाए, वहाँ मुरारी बापू की राम कथा की थाती दुनिया भर में धूम मचाए है देखो गुजराती। यहाँ डांडिया गूंज रहा है सारी सारी रात। जय 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 गुजरात हमारा, जय 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 गुजरात। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे आवी हर गाए हय्यू हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग रवि चलता है मन हर वेदी गुनगुनाए हाय 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की बहेरी में दिल की बाजी शहनाई 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 ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन में हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 रास रचीलो साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी आजा आजा टमटमाता शमणाओ छे आवी
Sat Shri Akal. Punjab, a land of 5 rivers, and is the heart of India's Sikh community. It is known for its brave, helpful, and hospitable people, and their exuberant festivals and celebrations. Punjabis love everything that is over the top. Colorful dresses, foot-tapping music, and an undying love for food. ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਵੇਖ ਨੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ख्वाब ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜਦ ਵੀ ਜਨਮ ਲੇਵਾ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। वफादार है मिट्टी पंजाब वाली, वफादार है खून पंजाबियां दा, ओ यारी इन्हां दे नाल दी नहीं हो किते, वैर मनना पऊ पंजाबियां दा, जग्गों बारियां पल्ले विच खूबियां ने, जिथे जांदे पछाण बना लेंगे, देवी पेट ले किते भी जा बैठन, तौर वखरा ही रहू पंजाबियां दा। पंजाबियां की शान वक्री, रब वर्गे ना दे तेरे, पंजाबियां की शान वक्री, मोटी दुनिया च वसदे बथेरे, पंजाबियां की शान वक्री, मोटी दुनिया च वसदे बथेरे, पंजाबियां की शान वक्री, रब वर्गे ना दे तेरे, पंजाबियां की शान वक्री। भंगड़ा भी पाते ने, खुशी विच भंगड़ा भी पाते ने, बेटा बेटे सारे पूर्व मनाते ने, बेटा बेटे सारे पूर्व मनाते ने, खुशी विच भंगड़ा भी पाते ने, बेटा बेटे सारे पूर्व मनाते ने, याद रखते ने, याद रखते ने, याद रखते ने अपने वडेरे, पंजाबियां की शान रखनी, रब वर्गे ना दे तेरे, पंजाबियां की शान रखनी, मोटी दुनिया च वसदे बथेरे, पंजाबियां की शान रखनी। Kashmir, paradise on earth. A beautiful land famous for its scenic splendor, snow-capped mountains, plentiful wildlife, exquisite monuments, hospitable people, and local handicrafts. It acquired the name of paradise on earth because of its uncanny resemblance with the Garden of Eden, described in religious and folk texts. ये झीलों में शिकारे, ये खूबसूरत वादी, हंसते हुए फूल, ये हंसी नजारे, फरिश्ते उतर आए हैं जैसे ज़मीं पर, अरे साहब ये जन्नत है ज़मीं पर। फिर जरा जरा महकेगा, खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे, इन राहों से जान
फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे। रिंद पोशमार गिंदने गाए रो रो रो। सरगम के मीठे मीठे सुर बोलो, बिन पोशमार गिनने गायो। ए आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, जीत ले जाओ सबके दिल को, ऐसा कोई गीत गाओ, दोस्ती का साथ छेड़ो, दुश्मनी को भूल जाओ। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, खंबागणी, जिसका कण कण वीरता की पहचान है, वह प्राणों से प्यारा मेरा राजस्थान है। Rajasthan, a magical land of colors. The people of Rajasthan express themselves in bright colors and jewelry. Rajasthan's unbeatable forts, splendid palaces and havelis, rich culture and heritage, beauty and nature, music and dance, art and craft, interpret the real extract of the magical land. रंगीलो राजस्थान जीनो बाजरेरी रोटी और सांगरीलो साग, रंगीलो मारो राजस्थान। Thank you.
that we have reached the end of all the renditions, I request you all to rise for the national anthem. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बहुत बहुत बधाई। और मैं प्रिंसिपल साहब के लिए एक शेर अर्ज करते हुए धन्यवाद देती हूँ। नजर नजर में उतरना कमाल नहीं, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ये है हमारी प्रिंसिपल। Sonu, announcement for the parents to collect the children. Dear parents, as a humble request, without creating confusion, you may go to the respective event in charges and collect your awards. All the children are at the back of the auditorium and in the side wings. Nobody is down, so please collect your students, collect your awards from here.